The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV. because the only side we're on is yours. Facts are the foundation of a news story, but it's the views that shape these stories. Because when you hear views from all sides, you get the complete picture. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But लगातार सरकार पे सरकार बनाने की होड़ में ये लगातार भूलते चले जा रहे हैं कि उस रास्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां भी करते चले जा रहे हैं. और जेएमएम का नाम भी कल सर अपनी बात शीघ्रता से कहिए सर, हम आराम से कर रहा हूं सर. जल्दी से कहिए. कल जेएमएम का भी नाम लिया गया था. जी. कल जेएमएम का भी नाम लिया गया था. मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को, आप लोगों ने हमारे साथ भी सरकार बनाई. 5 मिनट हो चुके हैं. लेकिन मणिपुर सर, 1 मिनट, मणिपुर में जिस तरह से तत्परता नहीं दिखाई गई, अगर बाद बाकी कहीं सरकार बनानी होती तो तुरंत ये तत्परता दिखाते. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change, and it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away,
It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV. because the only side we're on is yours. Facts are the foundation of a news story, but it's the views that shape these stories. Because when you hear views from all sides, you get the complete picture. Because menace has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt, and that's how I like to roll. Hello and welcome. You're watching NDTV, and the big story today, Parliament is gearing up for the big climax of the no confidence motion as the Prime Minister is set to speak in the Lok Sabha, responding to the opposition. The Prime Minister is in Lok Sabha. In fact, he entered a short while ago. Earlier in the morning, you had Finance Minister Nirmala Sitharaman, who hit out at the opposition, particularly the DMK, saying violence against women shouldn't happen anywhere, including in Manipur, and is a big concern. But the opposition must not play politics over this, reminding the DMK what happened in the assembly in 1989 with Jayalalitha, who was then in the opposition, and how the DMK acted, but now is raising a Manipur issue. Also reference to DMK's Draupadi remark. While you had Trinamool MP Mahua Moitra hit out at the government, saying violence in Manipur was the BJP-led centre's biggest failure. And in the Rajya Sabha as well, the discussion on Manipur issue is under Article 167, though Derek O'Brien then alleged that the government was disrupting the House, to which Minister Piyush Goyal hit out, saying that he was responsible for the disruptions. The YSR have mocked us, not to bring down anything, but to resurrect something. My request to you, that's why I said with 3 sentences, is please help us as the chairman to preserve order. And after that, 3 sentences. 1, because if order is not preserved, this is what is happening. The government is responsible to Parliament. Parliament is responsible to the people. If order is not preserved and Parliament is disrupted, then the government is not responsible to the people. My charge is the government is disrupting Parliament because they don't want. Sir, Derek O'Brien has said he is the person responsible for most of the disturbance in the House, for the approach that he's taken.
And here he is trying to preach, become holier than thou, and trying to say that you should be responsible for the disorder. He's alleging that the chair is not doing its duty. The fact is, you as the chair and the other deputy and vice chairman have continuously made every possible effort that is humanly possible to maintain order in the house. It is this Gadbadiya Gadbandhan and this Ghamandiya Gadbandhan, which has again and again disturbed the house and not allowed the proceedings of the house to continue. ये गड़बड़ भी करते हैं और अपना घमंड भी है कि हम जैसे कहते हैं वही रूल होगा. शेयर की रूलिंग का भी अपमान करते हैं. शेयर का भी अपमान करते हैं. Women suffering anywhere, Manipur, Delhi, Rajasthan, anywhere, we'll have to be taking it seriously. No politics played on it. But Madhya Pradesh. But I want to just remind Honorable Member Kalimori and remind this entire House of one incident, sir, of one incident which happened on 25th March 1989 in the Tamil Nadu Assembly, again a Sabha, a very sacred Sabha. And what was it? Then she hadn't become Chief Minister, leader of the opposition, first woman, that first woman. Jayalalitha's sari was pulled in Tamil Nadu. Right, so that is what the finance minister said earlier today in the no confidence debate. Let's go across to Sunil Prabhu now for more. And Sunil, you also had Jyotiraditya Scindia speaking and hitting out at the opposition, saying that they have no confidence in their own motion, as they had also had a walkout. Also, Adhir Ranjan Chaudhary made some remarks that have now been expunged. So it's been quite a lot of developments in Parliament with all these statements, and we're now waiting when the Prime Minister will speak. That's right. In a short while, the Prime Minister will speak, and Mr. Adhir Ranjan Chaudhary welcoming, and as the Prime Minister came to the floor of the House, saying that it is this motion which has brought the Prime Minister to speak in Parliament. Of course, there's been a huge furore. They were uncomfortable with those allegations that were being alleged against the Prime Minister. The entire Council of Ministers, led by Mr. Amit Shah, standing up, and then the rule book being shown. And we'll have to wait for that official order, of course, of expunging to take place. But it's been a day where, various parliamentarians are continuing to raise their issues and debate and discuss. As you're well aware, this motion, as the opposition India Alliance had put, was for getting the Prime Minister to be responsible and accountable on the floor of the House, to speak on the floor of the House. That's the appropriate place. That's where the Prime Minister is expected. After all, he's the leader of the House, and he's somebody who should respond to the members of Parliament on the floor of the House. And when that was not forthcoming, they moved this motion of a no confidence motion to get him to speak. And we'll, of course, as you rightly pointed out, the numbers clearly in favor of the NDA alliance. They are going to win this no confidence motion. There was never a doubt about it. But the issue was about getting the Prime Minister to open and speak in Parliament. All right, Sunil. So the Prime Minister expected to speak in a short while from now. Let's just cut across to Lok Sabha, where Rajavardhan Rathore is speaking. कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है. मैं तो वापस उसी पे जाता हूं. क्या एमओयू हुआ था उस समय चाइना के साथ, जो आज तक भारत को नहीं पता. कहीं ना कहीं इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए सुपारी उठाई हुई है. भारत को ये तोड़ना चाहते हैं हर तरह से. राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है. पिछले 4 साल के अंदर 60% दलितों पर अत्याचार बढ़ा है. ये है असलियत राजस्थान की, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है वहां पर, सभापति जी, ऐसा माहौल बना दिया है कि एक खास समुदाय के लोग पुलिस थाने के अंदर खड़े होकर वो खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं, लेकिन इनकी सरकार कुछ नहीं करती. पीएफआई बैंड है. यहां पर गृह मंत्री जी ने कल बताया पीएफआई पूरे राष्ट्र के अंदर बैंड है, लेकिन पीएफआई राजस्थान के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मार्च करती है. यह है असलियत इनके चेहरे. कहीं ना कहीं इन बाहर की कोई ना कोई एजेंसी
कोई ना कोई संगठन, बाहर की कोई ना कोई एजेंसी कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है। मैं तो वापस उसी पे जाता हूं, क्या एमओयू हुआ था उस समय चाइना के साथ जो आज तक भारत को नहीं पता। कहीं ना कहीं इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए सुपारी उठाई हुई है, भारत को ये तोड़ना चाहते हैं हर तरह से। राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पिछले 4 साल के अंदर 60% दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। बीकानेर के अंदर दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जालौर जिले के अंदर एक 9 साल के दलित लड़के को मार दिया जाता है क्योंकि वो पानी पीने गया था। जम्वा रामगढ़, मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर एक महिला टीचर, मतलब टीचर तक को भी नहीं छोड़ा, एक महिला टीचर को जिंदा जलाया गया। वहां पर ये दलितों के ऊपर अत्याचार ये कर रहे हैं। इन्होंने हर तरह से धोखा दिया है। मैं घोषणा पत्र पर आता हूं, इन्होंने घोषणा पत्र में भी धोखा दिया है। ये तो अविश्वास लायक भी नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार के खिलाफ लाए हैं, लेकिन पर ये अविश्वास लायक भी नहीं है। इन्होंने राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। ये है असलियत इनकी। घोषणा पत्र के अंदर ये कहते हैं कि हम हस्तशिल्प कला और हथकरघा निदेशालय का गठन करेंगे, नहीं करा। यहाँ पत्रकार बैठे हैं, राजस्थान के पत्रकारों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लेकर आएंगे। 4.5 साल हो गए, एक भी अधिनियम नहीं आया। इन्होंने हर तरह से राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। और अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लेकर आए? एक ऐसी पार्टी जिसने जो कहा वो करा, एक ऐसी पार्टी जिसने बोला धारा 370 हटाएंगे तो हमने हटाया, हमने बोला राम मंदिर बनाएंगे तो हमने बनाया, हमने बोला आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हमने दिया। हर तरह से उस सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं, अगली बार यह घोषणा पत्र दें तो उसमें एक स्टार लगाएं। वो स्टार लगा के बोले टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले। मैं अभी खत्म करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं ये कहकर कि जब जीत न सके बाजी वे हाथ मलने लगे, जब जीत न सके बाजी वो हाथ मलने लगे। आसमां सी ऊंचाई, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के लिए बोल रहा हूं, आसमां सी ऊंचाई देख वो जलने लगे। अभी तो बहुत कुछ तमन्ना है 56 इंच के सीने में। अरे रुकिए, बैठिए, अभी से आपस में क्यों लड़ने लगे? ये इनकी असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सी थॉमस जी, आपका नाम नहीं बोला है सर, थॉमस जी का नाम बोला। आप प्लीज बैठ जाइए। आपका नाम नहीं पुकारा गया है, आप बोलिए प्लीज। Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to participate in this debate on the no confidence motion proposed by India Alliance. I, on behalf of my party, Kerala Congress M, support the no confidence motion. The prolonged clash between two groups, Meiteis and Kukis, has led to widespread violence, death and displacement in Manipur. Sir, not only in Manipur, in the country at large also is witnessing tensions, violence against women, marginalized sections of the society and also minorities. These communal tensions and violence are initiated by certain forces to create communal polarization and to take political advantage out of it. The recent developments in Haryana is another example. Sir, myself and Sri Jose K. Mani MB, Chairman of Kerala Congress Party, we went together to Manipur on 2nd and 3rd July this year. During our visit, we witnessed several Christian churches. More than 260 churches were demolished and burned down. Sir, we were completely, these churches were completely destroyed and burned. The scenes we saw there was devastating and painful. The Christian tribal communities feel that there has been a clear bias in the way matter has been reported. Also, they are very much afraid of the way the Chief Minister has made a statement in the press conference that 40 cookie terrorists were killed by security forces. Sir, this shows that the government, the state government is biased. Sir, the central government also is biased.
when our Honorable Prime Minister visited Sacred Church in Delhi on the day of Easter, the entire Christian community in the country was very hopeful. Again, when he came to Kerala, he met all the bishops in Kerala. We were happy about it. But the developments in Manipur is totally against the wishes of the Christian community, sir. Sir, despite the Honorable Home Minister's visit to the state, it continues to be in a state of shocking violence. It is clear that the measures taken by the state and the central governments thus far have been insufficient to hold the violence. Sir, during our visit, we could witness a complete breakdown of law and order situation. Our vehicle was blocked by a group of Meitei women known as Mera Pabis on the National Highway 2 at Sekmai. They inspected our vehicles, demanded to know our whereabouts and the purpose of our visit, and all this happened while the army as well as the police personnel were looking on. Sir, the signs of complete breakdown of law and order situation were manifested in a viral video which is already known to all over the world, where the two women cookies were stripped, paraded naked and sexually assaulted. It is a matter of collective shame for this house and the entire country that our sisters are being treated with such humiliation. Sir, the human rights violation in Manipur have brought our country to a total disgrace globally. It is quite astonishing that in spite of all these violence and human rights violation, our Honorable Prime Minister has not bothered to visit Manipur so far or take any steps to bring peace in that state. Sir, more than the violence, the silence of the Prime Minister is shocking. Sir, from the part of Kerala Congress M, we demand the following matters. One, the Honorable Prime Minister should visit Manipur and announce a special package to the state for bringing peace over there. The Chief Minister Biren Singh, who failed to deliver his constitutional duties, be removed without further delay. A joint parliamentary committee be constituted to visit and study the reasons behind the conflict and also to propose some suggestions for making changes there. Sir, compensation should be paid to all the victims and their rehabilitation should be ensured in a time-bound manner. Above all the places of worship destroyed during the violence should be rebuilt by the government. Thank you, sir. Thank you. Have some butter, please. Shri Vijay Baghel ji. धन्यवाद. There's too much talking but very little being said. Too many voices but hardly any being heard. You turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. 23 years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on.
a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity. Because at NDTV, trust is everything. A right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change, and it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Welcome back. Parliament now gearing up for the Prime Minister to address the House as he responds to the no confidence motion. The Prime Minister, in fact, entered the lower house a short while earlier. Earlier today, you had Finance Minister Nirmala Sitharaman hitting out at the opposition, also talking about the achievements of the Modi government when it came to the economy, and also hitting out against the DMK, saying violence against women shouldn't happen anywhere, including in Manipur, and it's a big concern. But the opposition is playing politics. She reminded the DMK what happened in the assembly in 1989 with Jayalalitha, who was then in the opposition, and she said DMK never acted, but now is raising Manipur, making also reference to DMK's Draupadi remark. You also had Trinamool Congress leader Mahua Moitra hitting out at the government, saying the violence in Manipur was the BJP's led centre's biggest failure of the double-engine Sarkar. She also hit out at the whataboutery over Manipur, where BJP leaders and ministers are talking about violence in Congress-ruled states. She said there should be no whataboutery. Now, earlier today, the Prime Minister's office had tweeted that around 4 p.m. this evening, Prime Minister Modi will take part in the discussion on the no confidence motion, and in a short while from now, we're expecting the Prime Minister to speak. Earlier, the Prime Minister entered the Lok Sabha as Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary was speaking, and in fact, he said that the power of no confidence motion has brought the Prime Minister in Parliament today. Remember, the opposition knows it doesn't have the numbers. You can see them on your screens there. This no confidence motion will be defeated, but it is the opposition's way of getting the Prime Minister in the House to speak on the issue of Manipur. The issue of Manipur is something that has disrupted the monsoon session since the start, with the opposition demanding the Prime Minister make a statement, while the government said they're open to a discussion, but they did not agree to the demands of the opposition. Finally, opposition bringing the no confidence motion to force the Prime Minister to speak on the issue of Manipur. Let's just listen into some of the statements made earlier. Finance Minister Nirmala Sitharaman spoke, as did Adhir Ranjan Chaudhary and Jyotiraditya Scindia. Honorable Speaker sir, आपसे विज्ञप्ति करती हूँ कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए। 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 India was declared as a fragile economy. Words like बनेगा, मिलेगा,
ये सब हो गया अभी। अब वो नहीं है, जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं, बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारी देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। Well, let's go across to Sunil Prabhu now for more. And Sunil, we're expecting the Prime Minister to speak, any moment now. The Prime Minister's office had tweeted that he would participate after 4 o'clock. But it's been, these last 2 days of this debate and counter-attacks between the opposition and the government. Also, you've had the opposition alliance, India, being under constant attack by the BJP leaders. That's right, Gargi. In fact, that was given. The fact that they would definitely be under attack. The India Alliance, because of the various internal contradictions that they have, but they have one mission, to fight the BJP ahead of the 2024 elections, to work together. That's been their mission. That's why they formed this alliance. And it's in this context that they have moved this no-confidence motion, as the Prime Minister himself has alleged, to really show unity amongst themselves, which is going to reflect upon the internal contradictions, the fights and the internal, for example, the way each party differs with each other and fights state after state. For example, the left, and you can cite a number of instances as has been done by a number of speakers. But what's been the good fallout in this entire no confidence motion for people like you and me is that there has been a debate and discussion on the floor of the House. The Prime Minister finally has come on the floor of the House and will be speaking to and responding to this no confidence motion. And no less than Mr. Adhir Ranjan Chaudhary has talked about that. It's also been an occasion for various issues, be it Manipur, be it China, be it high inflation, be it unemployment, be it, attacks against minorities, tribals, and various other weaker sections of society have all been reflected, Gandhi. So it's been a day, the last 3 days has been a good debate and discussion on the floor of the House, which we haven't witnessed for a very long time on the floor of the House. Right, and Sunil, after the Prime Minister speaks, then that debate, he will have the last word? That's right. He will. He's the one who has to move the motion, and he will be given an opportunity to give a short rebuttal in his own way to the various points that have been raised by the Prime Minister. So, unlike a vote of confidence, and we've been saying there have been a number of no confidence motions. The vote of confidence is different. Deva Gowda, I.K. Gujral, Vajpayee, those were vote of confidence. Those were by the President of India, directing them within 30 days to ensure that they have the support of the majority of somebody. If any political party, for example, Jayalalitha withdrew in 1999, then President K.R. Narayanan asked for a vote of confidence, and that's why the vote in that vote of confidence they lost by 1 vote. It's not a no confidence motion. That's the big distinction. Today is a no confidence motion. In 2018, it was a no confidence motion that had been moved, and that's the subtle difference which we must explain to our viewers. Right, Sunil, and also if you could just tell us about Rajya Sabha there as well. There was to be a discussion on Manipur, and we saw, Derek O'Brien raising a certain point and Piyush Goyal answering him. Take us through what happened there. So there was a war of words which continued, each one, making
a whole lot of political points. Finally, I think there has been a decision that under 167, the sense of the House, a motion will be moved, and hopefully tomorrow is the slated day, even though it's the last day in Parliament. There will be some discussion and debate on the floor of the House on this very important issue of Manipur, which the Rajya Sabha has been waiting for. The opposition, as you are well aware, has been walking out day after day without any discussion, and bills are being passed without the opposition participating. Critical bills, important bills, which affect the lives of many people, which has huge ramifications in the years and months to come. And it's in that backdrop that Parliament has been passing these bills. Even today we saw, as you saw, Gargi, an attempt to dilute the Supreme Court's own constitutional bench judgment on the appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissions. After Mr. Arun Goyal was appointed in breakneck speed within 24 hours, he resigned as a secretary, resigned from the IAS, and was appointed as an election commissioner just to thwart the entire constitutional bench process which had begun for hearing the appointment of election commissioners and chief election commissions. Of course, the Supreme Court has retrospectively said that his appointment will continue, but it's in that backdrop now that they are attempting to dilute and remove no less than a big constitutional body, the Chief Justice of India, and replace it by a minister who is nominated by the Prime Minister, so that the government will have the majority in appointing the Chief Election Commissioner and the election commissioners, who are expected to be an empire, and a free and fair empire, as they conduct elections across this country. And they have come under great scrutiny in the recent times. All right, Sunil, thanks so much for joining us. With that, well, let's return now to the Lok Sabha. ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. మల్లన్న సాగర్, రంగనాయక సాగర్, అనంతగిరి సాగర్. ఇది గోదావరి మీద మరి దాదాపు మొత్తం గోదావరిలో ఉన్న మొత్తం పై నుంచి కింది నుంచి పై వరకు రివర్స్ పంపింగ్ ప్రాజెక్టు. ఇంత గొప్ప ప్రాజెక్టు కడితే మరి మీ బీజేపీ ప్రభుత్వం, యూనియన్ ప్రభుత్వం మరి మాకు ఎన్నడూ కూడా సహాయం చేయలేదు. మరి దానికి అబద్ధంగా మరి 86,000 కోట్లు ఇవ్వడం అనేది చాలా దారుణం. మరి మా లీడర్లు ఉన్నారు, బీజేపీ ఎంపీలు ఉన్నారు, మరి లోకల్ నాయకులు ఉన్నారు, ఒక్క పైసా కూడా ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు. మరి గల్లీలో ఎక్కడ కూడా మాట్లాడలేదు, పార్లమెంట్లో కూడా మాట్లాడలేదు, ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు. గల్లీలో అయ్యాల తెలంగాణలో అత్యధికంగా అవార్డ్స్ వస్తున్నాయి అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో కూడా ఇవాళ తెలంగాణకు వచ్చినాయి. एक रुपए नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया, ये गलत है। झूठे आई तो बता देना, एक नया पैसा भी नहीं दिया। Chairperson, no, nothing is basic anatomy and structure of federalism of the state-center relationship is under threat. This was what was warned by the great parliamentarian and the first chief minister of DMK, Arinjaranna, that safeguarding the state's rights and the state's self-governance should be of utmost importance for a prosperous and stable India. And matters one by one belonging to the state are being taken away by the centre, from the state list to the concurrent list. For example, the recent Library Act, which was first formed by the Tamil Nadu government in the year 1948, is now in a proposal to be taken away by the concurrent list. And also, when the finance minister, when she addressed over here, sir, I would like to know through you that when the rest of the aims in India have been funded by the union government, why is the stepmotherly treatment given to Tamil Nadu that it has to be taken a loan from JICA? And also, when the foundation stone of AIMS was laid, there are many other colleges which have started with the buildings and infrastructure which have been started after the mother AIMS. Why is it that now that it is still that the adjoining district only they are going for a course, and when they come back after 5 years, still they wouldn't have stepped into the AIMS college in Madurai? What a shameful act that is. And sir, talking about that, which they very boastfully say of the double engine Sarkar, which they have failed. Sir, I would like to say that even all states in India are double engine, because they have a non-elected, nominated engine driver in the name of a governor who takes care of everything. And that is very, very sad that this thing, where a classic example is infringing upon the state rights. Sir, coming to Manipur, sir, we have seen that it is a black mark on the democracy. ये बात पहले भी कही गई है,
कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हुए उन पर टिप्पणी। आप बैठिए, आपको कोई काम, आप बैठ जाइए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? Manipur has been प्लीज डोंट नो, प्लीज टेक केयर जी, बी केयरफुल। So Manipur has been a black mark on the world map, sir. It has been which could have been stopped at the initial stage, but it has been blown up, and they remain a mute spectator till today. A video of a woman being paraded naked, this incident occurred on the May 4th. The finance minister was well enough to not discuss about the Manipur issue, the women being paraded, but she was able to talk about a well-staged, orchestrated drama which she says happened in the Tamil Nadu State Legislative Assembly, which has been expunged. And our Kalanjar, our great leader Kalanjar Karunanidhi, in Tamil, he used to say, எப்படி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி நூல் பிடிச்ச மாதிரி ஒரே கதையை பிசராம அசராம சொல்றீங்க. That is, I would like to translate. That is, what affinity does the finance minister have towards the lady chief minister, that in spite of the Tea Party being held and she had brought down the same BJP government, what affinity does the finance minister have towards the former lady chief minister? So, I would also like to say, sir, that the India that we seek is for unity, and the country that they want is for divided. That the India that we want is to share love, and that the country that they want is to spread hatred. Sir, the India that we want is the peace for all citizens, irrespective of the religion, caste and creed. The country that they want is for one religion. Let me remind my, sir, I will just finish, sir, just 1 minute, sir. Just let me remind my friends who seek Hindu Rakshtra. First they will come for the Muslims, then they will come for the Christians, then they will come for the minority religions. And when they are done with all that, they will come for the people who are underprivileged, marginalized minorities within Hinduism. This is not the India that our forefathers dreamt of. And I am fearful that this is the India that are we going to give to our children and to our future generations. So the nation has started speaking in one voice against the BJP government. The fear has started coming in. The fear to not visit Manipur and address Manipur. The fear that you cannot address the nation from your treasury benches. The fear that you move behind and speak. Sir, the fear for you to start gathering an alliance with 28 alliance partners who do not even have 28 parties, do not even have one MP, and you want to form an alliance. This is a victory for the opposition and India. It is true for you to go and introspect. Go and see yourself. Sir, I'm just finishing, sir. Just 15 seconds. Go and see yourself in the mirror. It will not show your bloated 56-inch chest. It will not show you proud, but it will show the king in his new clothes. It will reflect the reality and show the ugliness and chaos you have created. The time has come. India has to wake up. India will give you a befitting reply. Future India will belong to prosperity, love, care, sharing and affection. And India that our forefathers. बीआरएस के मेंबर ने बोलते हुए मेरे ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाया, प्रिविलेज भी दिया है इन्होंने सर। एक तो तेलंगाना यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कभी किसी जिंदगी में नहीं बनता। दूसरा सर, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए पीएफसी और आरईसी ने 86,000 रुपया श्री संजय कुमार All right, so the no confidence motion debate, they're still taking place. In a short while, we're expecting the Prime Minister to address the House, and we'll return to the Lok Sabha for that. But moving on to other news, and the other big story today, in fact, this would have been the big story had this debate not been underway. It's a move that's likely to trigger a fresh face-off between the government and the judiciary. The centre is set to push legislation that will exclude the Chief Justice of India from the process to appoint the country's top election officers. The Chief Election Commissioner and other election commissioners. This bill to come up in the Rajya Sabha, and it proposes that top election commission officers shall be appointed by the President on the recommendation of a panel. And this panel will comprise of the Prime Minister, Leader of Opposition in the Lok Sabha, and a union cabinet minister nominated by the Prime Minister. So essentially leaving out the Chief Justice and also making it quite clear that it will be the government's choice that will become the Chief Election Commissioner. So the Chief Justice of India will be left out of this panel to select the Chief Election Commissioner. Earlier we spoke to some members of Parliament for their reactions to this. कानून मंत्री ने सीईसी बिल आज राज्यसभा में पेश कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, भारत की जो निर्वाचन प्रक्रिया है
दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है और निर्वाचन आयोग ने बहुत जिम्मेदारी के साथ अनेक व्यवधानों के साथ अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद बहुत सही दिशा में काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसमें और अधिक पारदर्शिता होना चाहिए और अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। इसलिए आज जो बिल लाया गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और विपक्ष का नेता और एक कोई सरकार का मंत्री 3 लोगों की कमेटी होगी, तो मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग को सक्षम बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, सही ढंग से प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ये जो बिल जो लाया गया है बहुत ही सही है और यह आने वाले दिनों में निर्वाचन का जो बहुत सी जो विकृतियां हैं उनके दूर करने में समर्थ होगा। हंगामे के बीच कानून मंत्री ने सीईसी बिल आज राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया। मेरे साथ सुशील गुप्ता हैं, आप कैसे देखते हैं बिल के प्रावधान को? ये गैर लोकतांत्रिक बिल है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की इस देश के ऊपर कब्जा करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट निर्णय दिया था कि देश का मुख्य चुनाव आयुक्त निष्पक्ष होना चाहिए ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव हो सके और निष्पक्ष सरकार चुनी जा सके। उसके अंदर प्रोविजन था कि देश का प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसके 3 मेंबरी कमेटी होगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी। परंतु आज जो बिल पेश किया गया है, इस बिल के अंदर एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक उनके मंत्री होंगे और एक नेता प्रतिपक्ष होगा। मतलब 2 बीजेपी के आदमी होंगे और एक विपक्ष का आदमी होगा। 2 बीजेपी के आदमी मिलकर बीजेपी के आदमी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे और वह बीजेपी के लोगों को जिताएगा। तो देश में लोकतंत्र कहाँ रह गया? मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने राज्यसभा के अंदर ये बिल पेश किया, क्यों नहीं विपक्ष की सुनी गई? क्यों नहीं उसके ऊपर जो रेजोल्यूशन देना चाहते थे, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते थे, शोर शराबे में उसको आपने इंट्रोड्यूस करा दिया? ये गैर कानूनी लोकतंत्र का गला घोटो बिल है। जैसे आपने दिल्ली सेवा बिल लेकर आए, ऐसे ही देश को गुलाम बनाने का बिल है। जी। And news now from Manipur, where another horrific case of a sexual assault during the ethnic clashes in early May has now come to light. This after the survivor, who has been living in a relief camp, finally filed a police case. More and more women in Manipur are finally coming to the police to narrate the shocking ordeal that they went through, the barbarism that they faced as authorities encouraged them to speak up. In the latest case, a 37-year-old woman, a married woman from Manipur's Churachandpur district, has alleged that she was caught by a group of men while she was fleeing from her burning house with her 2 sons, niece and sister-in-law. And while they managed to escape, she fell down and was caught up by this group, and she was gang raped on the 3rd of May, the day the violence broke out in the district. Let's go across to Ratnadeep now for more. And so, Ratnadeep, now more and more survivors of violence are, being emboldened to speak out finally. And this lady, and she had this experience on the first day the violence broke out. That's right. In fact, what police sources are telling us is that her case may be also one of the first incidents of violence against women in this spell of violence that has continued in Manipur for 100 days. Remember, if we go by her complaint letter, which she had filed on 9th of August at the Bishnupur police station, which has filed a 0 FIR. Remember, this incident has taken place in the neighboring Churachandpur district. So she was a resident of the Churachandpur district, 37-year-old married woman. But now she doesn't have a home anymore. Her home has been burned down to ashes. She lives in a relief camp in Bishnupur district, and therefore the 0 FIR has been filed at Bishnupur. Now it has been transferred to Churachandpur district, where it will be investigated. In fact, sections of gang rape and sexual assault has been, IPC sections has been now invoked in the FIR. In her complaint letter, which NDTV has seen, it's clearly written that this incident took place at 6:30 p.m. on 3rd of May. Remember, 3rd of May, the violence started in the evening after somewhere around 5:30, after 5 o'clock actually it picked up. And 6:30 in the evening would be the initial hours of the violence, when the violence was picking up, when the arsons had started to take place in the border areas of Bishnupur and Churachandpur district. So
According to the FIR, her village was, attacked. One after another, houses were torched by the miscreants. She ran. Her husband was not at home at that point of time. That's what police sources are telling us, that they've got it to understand in the initial investigation. She ran for her life, carrying her niece on her back and holding her two sons, along with her sister-in-law, who was also carrying another, child. And so were the other people in the village. And as they were running, she almost ran around, half a kilometer from her house, that she fell down. And she was not able to get up. She hurt herself. Her sister-in-law by this time has gone a bit ahead, and she came back. And since she was not able to get up, according to the complaint letter, she had handed over the three children to her sister-in-law, including her niece and her two sons. Her sister-in-law took them along with her. She tried to get up. She was struggling, and that is the point of time when she says, and she alleges in her complaint letter, that 5 to 6 men who were the miscreants, who were part of the huge mob which had attacked their village, and she mentions that they are from another community. We are not mentioning the community to which he belongs or the community from which the attackers are. Right. We don't want the situation to escalate further as a responsible media. But she, clearly writes that she, that group of 5 to 6 men pins her down. She tries to resist. She's outnumbered. She's hurt. And then she alleges that she's sexually assaulted very badly. And then they leave her and go. She somehow manages to get up. And soon people from her community get her. She's brought to a nearby relief camp where she actually takes refuge. Now, she basically hides this matter initially from her family members as well, and then from the society, because what she writes is very, very, very significant. She says that, I did not disclose the incident to save myself, my family's honor, dignity, and to save ourselves from a social ostracism. This is very important, because in rural areas, many women perhaps might have not come out just like her, despite they being victims of sexual violence in this horrific spell of violence that Manipur has seen for 100 days now. Remember, today is the 100th day. That's right, Ratnadeep. So really, the kind of violence that women have had to undergo, and now more and more women are emboldened to speak out after the matter, caused such outrage only after a video emerged. Remember, all this happened, as Ratnadeep was saying, over 100 days ago. In fact, it's 100 days today since the violence broke out in Manipur. But even so, it was after that video went viral that people really realized the horror of what was happening in Manipur and how women especially were attacked during the days of that violence. Now, staying with news of Manipur, on the day that Home Minister Amit Shah gave a 2-hour-long response to the no-confidence motion inside Parliament. On the same day, he also met with a delegation of Kuki-Zo leaders from Manipur under the leadership of the Indigenous Tribal Leaders Forum, ITLF, and settled what was emerging as a worrying stalemate with the mass burial of tribal victims of Manipur, whose dead bodies were in morgues, in fact, for over 3 months. Let's go back to Ratnadeep for more on that. And Ratnadeep, so now an alternative site will be found for the burial? That's what we are hearing from, some of the leaders of ITLF who were part of that meeting with Union Home Minister Amit Shah. Remember, this meeting took place yesterday morning, where the meeting lasted for close to 2 hours, where Union Home Minister, spoke at length in terms of how peace can be brought back to Manipur. In fact, remember, the tribal groups earlier wanted to organize a mass burial for the victims of the violence. 35 of the victims are there in the morgue of Churachandpur for 100 days now, or close to 100 days, because they have died in different days.
So they wanted to do this mass burial, and then the Meitei groups had objected, saying that the land where they wanted to do it close to the Churachandpur-Bishnupur border actually is a government land. So, and then there was a stay order by the Manipur High Court as well, that High Court wanted the status quo to be maintained. And now, and after that, there was, in the border areas there were tensions. So, Centre had asked for 7 days' time to resolve this, and Union Home Minister has asked the tribal groups to find another alternative place where they can organize a mass burial. Whereas the ITLF has gone on record to say that Union Home Minister has also assured them that in the hill areas, state police will not be allowed to operate alone. It will, even if it operates, it will operate with central forces, and also that Centre would take initiative in terms of opening up of scopes for students who are stuck, who cannot go to universities and colleges in Imphal Valley, the tribal students, or some of them are not being even able to go out of the state to attend their classes. So for their admissions and for their career, alternative arrangements would be made. This has been discussed. Also about starting helicopter services from the hill areas to directly to Imphal Airport is something that has been discussed. However, what we are hearing from sources is that on the core demand of a separate administration, MHA has said that would be looked into. Those demands will be political demands, will be looked into only after peace is restored in Manipur. So there is no clear word from MHA. Remember when Union Home Minister had visited Manipur, he had clearly said that at this moment they are looking at the priority is to restore peace. All right, thanks so much, Ratnadeep, for joining us with all those details. In other news now, the central bank today kept the key lending rate unchanged at 6.5% for the third time in a row, but said inflation rates are likely to rise, led by vegetable prices. RBI Governor Shaktikanta Das said Monetary Policy Committee has unanimously decided to keep the policy repo rate unchanged. This means the loan interest rates too are likely to remain unchanged. The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Our economy has continued to grow at a reasonable pace, becoming the 5th largest economy in the world and contributing around 15% to global growth. While the vegetable price shock may reverse quickly, possible El Nino weather conditions along with global food prices need to be watched closely against the backdrop of a skewed southwest monsoon so far. These developments warrant a heightened vigil on the evolving inflation trajectory. The cumulative rate hike of 250 basis points undertaken by the MPC so far is working its way into the economy. Nevertheless, domestic economic activity is holding up well and is likely to retain its momentum despite weak external demand. This was monetary policy as expected, but with a slight twist. Now, as far as the announcement from the Reserve Bank of India governor goes, the MPC, 6 members of the MPC have voted in favor of holding the repo rate at 6.5%. 5 out of the 6 members have voted in favor of maintaining the stance as withdrawal of accommodation. Typically, Professor Jayant Warma, who's the 6th member of this Monetary Policy Committee, votes against this stance because he doesn't believe that that conveys properly what the RBI or MPC intend to do in the future. Now, apart from these expected announcements, the slight unexpected news that came out of today's monetary policy announcement was that the RBI has revised the inflation forecast for this financial year. Remember that in June, the inflation forecast was brought down from 5.2% to 5.1% for this year. Now that has been raised again to 5.4% in the current meeting. What the expectation is that the food prices, especially vegetable prices, will push up the headline inflation numbers.
core inflation, which excludes the price increases in fuel and food items, that has been coming down. However, the headline number, that has been going up consistently, 4.81% as of June, and the expectation is that going for the July print that will come in the next week, that is expected to be significantly higher. That's what the RBI governor said. The RBI also estimates that in the next few months, these vegetable prices are likely to come down. Food prices will start trending lower, and that will control the headline inflation number, but it will still remain above the RBI's target of 4% that it maintains. Apart from the inflation-linked announcements, the RBI has also introduced an incremental cash reserve ratio instrument to control the excess liquidity in the system. Now remember that cash reserve ratio is a facility that where the RBI puts additional deposits from the banking system aside without paying any interest on those deposits. This has been introduced because other liquidity control measures have seen lukewarm responses from the banking system, and the RBI believes that this measure is essential to take out that excess liquidity, at least for the short period of time. So this starts in the fortnight starting August 12th. The RBI will review the incremental CRR as of September 8, whether it is doing what is expected from it or whether it needs to be extended. So that decision will come in either on September 8 or before that, depending on how the situation evolves. Remember that typically during the festive season, which happens in the later part of this year, their banks need that additional liquidity because lending activity tends to pick up. Apart from these announcements, one important thing that the RBI also announced was the introduction of a new framework where a transparent mechanism will be introduced wherever interest rate resets are concerned on floating rate loans. That will be keenly watched for by the reporters out there, but that's what came out of today's RBI policy announcement. And now moving away from news of the economy or even politics, let's get you entertainment news. And the big news today, a Rajni film releasing today. The superstar himself has gone pre-release to the Himalayas. That's been his favorite spiritual haunt. But there you can see the excitement among Rajnikant fans as his film Jailer was released today on around 800 screens across Tamil Nadu alone and 4,000 screens around the world. So fans there having a blast, as we always see the kind of atmosphere ahead of a Rajnikant film being released. Sam Daniel spoke to a group of fans. Here is a group of young working professionals who have taken leave to make sure they'll be able to watch the first day first show. That important? Yeah, absolutely. For us, it's like a festive spirit. So after 2 years, Superstar's coming on screen. I think he's going to set this screen on fire. So we're all waiting for that, to just reclaim him at the movies. Watch the teaser, the music you must have listened to. What's your take on that? The movie is going to be massive. It's going to be a massive blockbuster. No doubt about it. Goosebumps, absolute goosebumps you're going to have. So this movie is going to be a treat, absolute treat for everyone. Why is first day first show so important for Rajni fans? First day first show. I mean, it doesn't get better than that, right? Yeah. First day, first show. That's the best. That's the best vibe you can get. Are there on that particular day, and we want to watch that going live. Annate in 2021 didn't do that well at the box office. How about this? Expectations? This will be a massive hit. Better than Anatha for sure. Little children, you're also Rajni fans? Yes, You're a Rajni fan? Yes. What's that you like about Rajni? His style. His style, is it? Lastly, what do you think that connects Rajnikant, people of many generations? His attitude towards life, which is very nice. It's what we all share with him. My grandfather was a fan, my father was a fan, everyone. His charisma. Yeah, an absolute entertainer. He's a comic, he's an all-time superstar. Yeah. Thank you all very much for your time. So Rajni Mania on the ground. And finally, as part of the Dettol Banega Swasth India campaign, we share inspiring stories of healthcare professionals who've brought healthcare to the remotest parts of the country. Among them is Dr. Ravi Kannan, who has been providing cancer treatment to the underprivileged and vulnerable population in Silchar, Assam. In recognition of his exceptional work in serving the poorer community and offering cancer treatment, he was honored with the prestigious Padma Shri in 2020. Let's take a look at what was his inspiration. I am Ravi Kannan. I am a cancer surgeon working in Silchar in the south of Assam. I became a doctor because my mother wanted me to be a doctor.
She wanted to be a doctor and she could not become a doctor because of economic circumstances at home. Next best thing she did was to make her son a doctor. In general surgery, a lot of work that we do is cancer related. So cancer was an automatic choice. And then now all my philosophy is what I learned at the Cancer Institute. I had some amazing, I have been very fortunate all through my years of having had amazing mentors, teachers in school, professors in medical school, in surgery. During my cancer surgery training, I worked with Dr. Krishnamurthy and Dr. Shanta, very, very rare breed of people, and all my thought comes from them. The Padma Shri, I work in Silchar, which is a difficult to access region, and we serve a very large community. And though it is awarded to me by name, I think it does not belong to me. I have a very big team of people working with me, nearly 450 of my colleagues, doctors, nurses, technicians, cleaning personnel. And then we have the society that administers the hospital. And so I think the Padma Shri recognizes truly this human inter-networking, you know, this collaboration, not me as I'm just the face presentation of that. One of the very senior professors of 100 years ago made a statement, you know, that medicine is a profession one enters, not a trade one learns. And today I think in India there's a lot of option for transformative work, will sustain people, will reduce burnouts. When we see the difference, the impact that our work does create on others, on life around us, you know, it's very, very satisfying. And I would very strongly recommend to youngsters that they stick around in the country. What they have learned, they can go out, learn and come back, but implement things, you know, for the good of our people, of course the good of our neighbors also, the good of people beyond also, but it starts at home. The NDTV News Network that informs, inspires and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Facts are the foundation of a news story, but it's the views that shape these stories. Because when you hear views from all sides, you get the complete picture. Menace has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की जरूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव. Good evening, I'm Sneha Koshi. It's a big day today in the Parliament. Any moment from now, Prime Minister Modi is expected to speak in the Lok Sabha, responding to the no confidence motion of the opposition. He has just returned to the Lok Sabha as we speak. Let's just listen in to what's happening there. Your government will be toppled. You give a statement so that to retract those issues of illegal migrants. Mr. Speaker, sir, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन एक बात बोलना जरूरी है. I am a third generation persecuted person. In 2012, when there was no headway on this citizenship, I went to the Supreme Court of India to file a PIL, and based on my PIL in 2012, Supreme Court gave order to 18 chief secretaries of the state, of all the chief secretaries of 18 states of our country to give a statement on this. It was following this that Narendra Modi ji's government in 2009
19 brought the Citizenship Amendment Act to the House, and it was passed by the House both in Rajya Sabha and Lok Sabha. Today, we are at the cusp of history because we know that in the coming days, the Citizenship Amendment Bill will see the light of the day through the rules and regulations that will be formed. Mr. Speaker, sir, my second and last topic of discussion today in this no confidence motion is very, very important, is of national security. When our country got independence in 1947, Mr. Speaker, sir, India did not share a border with China. China का साथ हमारा कोई boundary नहीं था. It is on record. China 1950 में सियांकन को दखल किया. भारत की संसद में बहुत बार आवाज उठा, लेकिन तब का भारत की प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में आके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया. 1951 में चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया, हमारा संसद में आवाज उठा, कोई आवाज नहीं दिया. 1954 में I would like to draw your attention to the Sino-Indian Act, which is also called the Panchsheel Act. In that Panchsheel Act, what was written, I would like to bring to your notice today. The Sino-Indian Act or the Panchsheel Act said that we will mutually do no aggression. We will mutually respect the territory of each other. We will mutually have all equality and peaceful coexistence. लेकिन चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन को पीछे से छोड़ा भोंका, और 1959 में जब दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ के आ गया, और we know what happened following that. On 28th of August, I would like to reiterate, on 28th of August 1959, the then Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru ji, came to the Parliament to accept the fact that India had lost Akshay Chin. Mr. Speaker, sir, we know what happened then in 1962. We lost, and why we lost? Because of the nexus of and the unplanned diplomatic planning of Nehruji, Menonji, and Bijikol, and we lost a lot of territories. Today, Northeast. Okay. With one minute, I will take your indulgence for 1 minute. Today, Northeast is burning not because of Modi ji's government policy. It is the policy of the Congress, who actually divided not only Manipur, they had divided Tripura also, Assam also, all the other states. Today, Northeast is seeing unprecedented development. I invite my friends to come to Northeast, not just Prime Minister, who has visited almost 60 times. Had it not been for COVID, he would have made a century. I would like to bring on record last point, Mr. Speaker. Just one point is that the Council of Ministers has also made 400 plus visits in addition to the Prime Minister's 60 visits. Lastly, एक थोड़ा कविता बोल के मैं अपना बात को विराम देता हूँ. बोलो 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 शोभे, जोतो बिना बेनु रोबे, भारत आबार जगत सभाय श्रेष्ठ आसन लोबे, धर्मे महान होबे, कर्मे महान होबे, नवदिनमणि उदिबे आबार, पुरातने पुरबे. धन्यवाद. Please. Please. Right, and I'm being joined by my colleague Sunil Prabhu right now. Sunil, just moments from now, Prime Minister is expected to speak in the Parliament, but it's not just that, it's actually again Prime Minister responding to some very strong allegations made by the opposition, a no confidence motion moved by them, very fiery exchanges inside the Parliament. Prime Minister is there in the House, so is Sonia Gandhi. How is this going to be happening in moments from now? Well, it's really the first time that we'll be listening to the Prime Minister, and really an occasion for him to come and really respond to the various opposition charges that have been made. He'll be setting the agenda for the 2024 as well as the state elections, which are due next year.
the Prime Minister definitely going to take this opportunity. And as you have seen, Sneha, occasion after occasion, he's been extremely effective to shred the opposition. He's an extremely good orator. He's used Parliament and the no conference motions in 2018, as well as this time round, to really, make a political point and to continue to say that the opposition is opportunistic. This is more about really an alliance to see how they can, be together. And it's in that context we'll have to wait and see how things proceed. So definitely at this present juncture, we are really, as you rightly said, moments away before the Prime Minister is called to respond to that no conference motion. The numbers clearly in favor of him, but it's about the perception battle. It's about Manipur. It's about a host of other issues. And the Prime Minister will definitely respond to most of those points. And as I said, he's an extremely good orator. Please be rest assured, he's going to hit at the opposition. And he, as Mr. Pinaki Mishra from the Biju Janata Dal said, it's like a shredding machine. So we'll have to wait and see what exactly happens. I need to interrupt you at this point. We need to cut across to the Lok Sabha. ये मर्यादित बोलना चाहिए और संसदीय मर्यादाओं के आचरण के तहत बोलना चाहिए। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से भी दुख है, पूरे सदन को दुख है। बोलते समय हमें मर्यादित आचरण की व्यवस्था करनी चाहिए। इस विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था 353 के रूल के तहत भी, और उसके तहत भी मैं उसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद दूंगा। लेकिन फिर मैं अपेक्षा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हमारे सदन के नेता हैं। मेरी सबसे अपेक्षा है कि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए। आप सबको मैंने पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब सदन की उच्च मर्यादाओं, परंपराओं को कायम रखेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जो सदन के नेता हैं उनकी बात सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिवस से अनेक वरिष्ठ महानुभाव, आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। करीब सभी के विचार मुझ तक विस्तार से पहुंचे भी हैं। मैंने स्वयं भी कुछ भाषण सुने भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, मैं आज देश के कोटि-कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और अध्यक्ष जी कहते हैं भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था
कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया होता। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बिल, मेडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए। और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था। और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि वो ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है कि उनको फिशरमैन की चिंता नहीं है। यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल था, देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था। हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत कैसे उभरे, वैसे एक दीर्घदृष्टि के साथ सोचा गया था। उससे भी आपका इतराज। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है उससे जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है। उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे।
उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। और माननीय अध्यक्ष जी, आप झूठे एक दिन सदन चलने भी दिया, किस काम के लिए? आप झूठे तो अविश्वास प्रस्ताव पर झूठे, और अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती है, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई
जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी देश के जीवन में, इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिशों को तोड़ करके एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए सपनों के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है। 21वीं सदी का ये कालखंड, और मैं बड़ी गंभीरता से इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखंड, सदी का ये वो कालखंड है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर हमारे चरण पर। और हम सब ऐसे टाइम पीरियड में हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, देश के कोटि कोटि जन है। ये टाइम पीरियड बहुत अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है बदलते हुए विश्व में। और मैं इन शब्दों को भी बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ
इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। 140 करोड़ देशवासी, इन भारतीय समुदाय की सामूहिक ताकत हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। हमारे देश की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य, आज विश्व ने उनका लोहा माना हुआ है, हम उन पे भरोसा करें। ये हमारी युवा पीढ़ी भी जो सपने देख रही हैं, वो सपनों को संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 में भी उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके उनके सपनों को संजोने का सामर्थ्य कहां है, उनके संकल्पों को सिद्ध करने की ताकत कहां पड़ी है, वो देश भली भांति पहचान गया। और इसीलिए 2019 में फिर एक बार हम सबको सेवा करने का मौका दिया और अधिक मजबूती के साथ दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं के सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आशा अपेक्षा के मुताबिक वो जो काम करना चाहता है उसके लिए हम अवसर दें। सरकार में रहते हुए हमने भी इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। हमने भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख, उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और इस दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया? जब इतनी सानुकूल वातावरण, चारों तरफ संभावनाएं ही संभावनाएं, इन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है। आज
भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते। यही उनकी अवस्था है। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत के डीबीटी के और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए आईएमएफ ने इसे कहा है ये लॉजिस्टिकल मार्वल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, WHO ने कहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जान बच रही है। ये 4 लाख कौन है? तो मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन है। हमारे परिवार के निचले तबके में जिंदगी गुजारने के लिए जो मजबूर हुए उनके जन हैं। ऐसे 4 लाख लोगों की जान बचने की बात WHO कह रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, WHO स्वच्छ भारत अभियान का एनालिसिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों को मरने से बचाया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत स्वच्छ होता है, 3 लाख लोगों की जिंदगी बचती है। 3 लाख है कौन? वही झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर है, जिनके लिए अनेक कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ता है। मेरे गरीब परिवार के लोग हैं, शहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग हैं, गांव में जीने वाले लोग हैं और वंचित तबके के लोग हैं जिनकी जान बची है। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। ये लेकिन भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, मैं उस सोच से सहमत नहीं हूं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं
कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल दिए हैं तो। और वैसे होते हुए लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है? आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी
HAL। ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था? LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए था, आप अच्छा ही हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं, उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है। और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है, और हम तो होने ही वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं। इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में, भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में, नए तीसरे टर्म में, हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे। तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो?
अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते, अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो एक नंबर पर लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते हैं यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र्य है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और इसलिए सोए सोए सब हो जाएगा, यही एक आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वजह है कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि ये कोई जादू से लकड़ी से हुआ है, लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा, और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के मित्रों के फितरत में ही अविश्वास भरा पड़ा है। हमने लाल किले से
स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अविश्वास जताया। कैसे हो सकता है भाई, गांधी जी भी आके गए, करके कह के गए, क्या हुआ? अब स्वच्छता कैसे हो सकती है? अविश्वास से भरी हुई इनकी सोच है। हमने माँ बेटी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, उस मजबूरी से मुक्त होने के लिए शौचालय जैसी जरूरत पे जोर दिया। और तब ये कहना, क्या लाल किले से ऐसे विषय बोले जाते हैं क्या? क्या ये देश की प्राथमिकता होती है क्या? हमने जब जन धन खाते खोलने की बात की, तब भी यही बात निराशा की। क्या होता है जन धन खाता? उनके हाथ में पैसे कहाँ है? उनका जेब में क्या पड़ा है? क्या लेके आएंगे? क्या करेंगे? हमने योग की बात की, हमने आयुर्वेद की बात की, हमने उसको बढ़ावा देने की बात की, तो उसका भी मखौल उड़ाया गया। हमने स्टार्टअप इंडिया की चर्चा की, तो उन्होंने उसके लिए भी निराशा फैलाई। स्टार्टअप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने डिजिटल इंडिया की बात कही, तो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने क्या भाषण किए। हिंदुस्तान के लोग तो अनपढ़ है, हिंदुस्तान के मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, हिंदुस्तान के लोग कहां से डिजिटल करेंगे। आज डिजिटल इंडिया, देश आगे है। हमने मेक इन इंडिया की बात कही, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि उन्हें भारत पर, भारत के सामर्थ्य पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है। भाषण पूरा नहीं हुआ, आदरणीय अध्यक्ष जी, और ये विश्वास किस पर करते थे? मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था, और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है, तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। ऐसा मैग्नेटिक पावर है कि भारत खिलाफ हर चीजें वो तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे कोई विदेशी एजेंसी कहती है कि भूखमरी का सामना कर रहा कई देश भारत से बेहतर है, ऐसा झूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। भारत को बदनाम करने में क्या मजा आता है। दुनिया में कोई भी ऐसी बेतुकी बातों को मिट्टी के ढेले जैसी जिसकी कीमत ना हो, ऐसी बातों को तवज्जो देना
ये कांग्रेस की फितरत रही है और तुरंत उसका भारत में एम्पलीफाई करना, प्रचार करना पूरी कोशिश में लग जाती है। कोरोना में की महामारी आई, भारत के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाया। उन्हें भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, उनको भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, विदेशी वैक्सीन पर भरोसा, ये इनकी सोच रही। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कोटि कोटि नागरिकों ने भारत के वैक्सीन पर विश्वास जताया। इनको भारत के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस, कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस, कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी। यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस। माननीय प्रधानमंत्री जी, नागालैंड में प्लीज सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया था कि नारेबाजी नहीं करेंगे और आप सबने सहमति दी थी। नारेबाजी नहीं करेंगे, न इधर से करेंगे न उधर से करेंगे, नहीं करेंगे दोनों तरफ से नारेबाजी। नो, इधर से भी नहीं करेंगे उधर से भी नारेबाजी। प्लीज, आपने खुद ने व्यवस्था दी थी नारेबाजी नहीं करेंगे सदन में, नहीं करने किधर से भी नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी
25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस मौके पर ये आपके काम की बात बताता हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। आप थक जाएंगे, आप लोग थक जाएंगे। मैं आपकी भलाई की बात बताता हूं। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि एक गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं। आप सबको भारतीय मानस को जानने वाले लोग, आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं। वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते
दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा हमारे डीएमके के भाई सुन ले, जरा कांग्रेस के लोग भी सुन ले। अध्यक्ष महोदय, यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल करके अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल, कांग्रेस के अटूट साथी तमिलनाडु सरकार में एक मंत्री 2 दिन पहले ही ये कहा है, तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री ने कहा है, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके मुताबिक तमिलनाडु तो भारत में है ही नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, तमिलनाडु वो प्रदेश है, तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है। तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है। जिस राज्य ने हमें राजा जी दिए, जिस राज्य ने हमें कामराज दिए, जिस राज्य ने हमें एमजीआर दिए, जिस राज्य ने हमें अब्दुल कलाम दिए, आज उस तमिलनाडु से स्वर सुनाई दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आपके अलायंस अंदर ही अंदर ऐसे लोग हो जो अपने देश के अस्तित्व को नकारते हो, तो आपकी गाड़ी कहां जाकर के रुकेगी? जरा आत्मचिंतन करने का मौका मिले और आत्मा बचाओ तो जरूर करिएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, नाम को लेकर उनका ये चश्मा आज का नहीं है। नाम को लेकर ये जो मोह है ना, वो उनका आज का नहीं है, ये दशकों पुराना चश्मा है। इन्हें लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे।
गरीब को चारों तरफ उनका नाम तो नजर आता है, लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता। अस्पतालों में नाम उनके हैं, इलाज नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं, सड़कों हो, पार्क हो, उनका नाम, गरीब कल्याण की योजनाओं पर उनका नाम, खेल पुरस्कारों पर उनका नाम, एयरपोर्ट पर उनका नाम, म्यूजियम पर उनका नाम। अपने नाम से योजनाएं चलाई और फिर उन योजनाओं में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किए। समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति काम होते देखना चाहता था, लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ परिवार का नाम। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं है, कोई चीज उनकी अपनी नहीं है। चुनाव चिन्ह से लेकर विचारों तक सब कुछ कांग्रेस अपना होने का दावा करती है, वो किसी और से लिया हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज सीट पे जाइए, सीट पे। अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया। फिर भी जो बदलाव हुए हैं उसमें पार्टी का घमंड ही दिखता है। ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है। पार्टी के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम एक विदेशी थे जिन्होंने पार्टी बनाई। आप जानते हैं 1920 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली। 1920 में एक नया ध्वज मिला और देश ने उस ध्वज को अपना लिया। तो रातों रात कांग्रेस ने उस ध्वज की ताकत देख करके उसे भी छीन लिया और प्रतीक को देखा कि ये गाड़ी चलाने के लिए ठीक रहेगा। 1920 से खेल चल रहा है और उनको लगा कि तिरंगा झंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी बात हो रही है। ये उन्होंने खेल किया। वोटरों को भुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देखिए, 2 बैल, गाय बछड़ा और फिर हाथ का पंजा। ये सारे उनके कारनामे उनकी हर प्रकार की मनोवृत्ति का प्रतिबिंब करता है, उसको प्रकट करते हैं और ये साफ दिखाता है कि सब कुछ एक परिवार के हाथों में सब केंद्रित हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं।
पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, यह पाप आपको लेके डूबेंगे। आप जनता जनार्दन से ये पाप कैसे छिपा पाओगे? आप नहीं छिपा सकते हो। और इनको आज जो हालत, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले फिर छुरियां भी निकलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति को सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, गोपीनाथ बोरडोली, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, आप जितने भी नाम देखेंगे, सबने परिवारवाद की खुलकर आलोचना की है, क्योंकि परिवारवाद का नुकसान देश के सामान्य नागरिक को उठाना पड़ता है। परिवारवाद सामान्य नागरिक के उसके हकों, उसके अधिकारों से वंचित है। इसलिए इन विभूतियों ने हमेशा इस देश पर बात जोर दिया था कि देश को परिवार, नाम और पैसे पर आधारित व्यवस्था से हटना ही होगा। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रति उनकी कैसी नफरत की भाव है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही है। इस दरबार सिस्टम ने कई विकेट लिए, कितनों का हक मारा है इन लोगों ने। बाबा साहब आम्बेडकर, कांग्रेस ने जी जान लगाकर
2 बार उनको हरवाया। कांग्रेस के लोग बाबा साहब आम्बेडकर के कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। ये वो लोग हैं। बाबू जगजीवन राम, उन्होंने इमरजेंसी पर सवाल उठाए तो बाबू जगजीवन बाबू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको प्रताड़ित किया। मुरारजी भाई देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, आप कितने ही नाम लीजिए, दरबारवाद के कारण देश के महान लोगों के अधिकारों को इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। यहां तक कि जो दरबारी नहीं थे, जो दरबारवाद से जुड़े नहीं थे, उनके पोर्ट्रेट तक पार्लियामेंट में लगाने से इनको झिझक होती थी। 1990 में उनके पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में तब लगी जब बीजेपी समर्थित गैर कांग्रेसी सरकार सामने आई। लोहिया जी की पोर्ट्रेट भी संसद में तब लगी जब 1991 में गैर कांग्रेस सरकार बनी। नेताजी की पोर्ट्रेट 1978 में सेंट्रल हॉल में लगाई जब जनता पार्टी की सरकार थी। लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह, उनका पोर्ट्रेट भी 1993 में गैर परिवार की सरकार में लगा। सरदार पटेल के योगदान को भी कांग्रेस ने हमेशा नकारा। सरदार साहब को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा बनाने का गौरव भी हमें प्राप्त हुआ। हमारी सरकार ने दिल्ली में पीएम म्यूजियम बनाया, सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया। पीएम म्यूजियम दल और पार्टी से ऊपर उठकर सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। उनको ये भी नहीं पता रहा है क्योंकि उनके परिवार के बाहर का कोई भी प्रधानमंत्री बना हो, वो उनको मंजूर नहीं है, वो उनको स्वीकार नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है। और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने 2-2 बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहाँ कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहाँ कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है। आप
आपको सोने नहीं देती है और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी। 2024 में भी सोने नहीं देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे। आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे। आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी छुट्टी मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नौसेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे। नौसेना की युद्धपोत मंगवा लेते थे मौज मस्ती के लिए। आज उसी नौसेना के जहाज दूर देशों में फंसे भारतीयों को अपने घर लाने के लिए, गरीबों को अपने घर लाने के लिए उपयोग में आते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग आचार व्यवहार चाल चरित्र से राजा बन गए हो, आधुनिक राजा के रूप में ही जिनका दिमाग काम करता हो, उन्हें गरीब का बेटा यहां होने से परेशानी होनी है। आखिर ये नामदार लोग हैं और ये कामदार लोग हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें बहुत ही समय पर मुझे कहने का अवसर मिलता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है, इत्तेफाक देखिए कि कोई मैं तो तय करके बैठता नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो ये सीना तान के कहते, देखिए मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप में भी जनता जनार्दन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूं, कभी पसीना पोंछता हूं तो कहते हैं, देखिए मोदी को पसीना ला दिया। देखिए इनका जीने का सहारा देखिए। एक गीत की पंक्ति है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है।
और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम तो यहाँ बैठे हुए काफी लोग गांव गरीब वाली पृष्ठभूमि से हैं। यहाँ सदन में बड़ी संख्या में लोग गांव और छोटे कस्बों से आते हैं। और गांव का कोई व्यक्ति विदेश जाए, सालों तक वो उसके गीत गाता रहता है। एक आध बार भी कभी विदेश जाए, देख करके आया हो, सालों तक बताता रहता है कि मैं ये देख के आया, मैं ये देख के आया, मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा। स्वाभाविक है, गांव का व्यक्ति जितने बेचारे ने दिल्ली मुंबई भी न देखा हो और अमेरिका जाके आ जाए, यूरोप जाके आ जाए, तो वो वर्णन करता रहता है। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। अध्यक्ष जी, हम आप लोग तो जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। जब ऐसे लोग भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भारत में 50 साल तक उनके परिवार ने राज किया था। एक प्रकार से जब भारत के इस रूप का वर्णन करते हैं, तब वो अपने पूर्वजों की विफलताओं का जिक्र करते हैं। ये इतिहास गवाह है। और इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए नई नई दुकानें खोल करके बैठ जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता हूं। ये देश में
ये घमंडिया गठबंधन ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ्य बढ़ न पाए। हम अपने आसपास के देशों में देखते हैं जिन आर्थिक नीतियों को लेकर के कांग्रेस के और साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से खजाने से पैसे लुटाकर वोट पाने का खेल खेल रहे हैं, हमारे आसपास के देश के हालात देख लीजिए, दुनिया के उन देशों की स्थिति देख लीजिए। और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो जनता इनको सुधार देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की चीजों का दुष्परिणाम हमारे देश पर भी हो रहा है, हमारे राज्यों पर भी हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप वायदों के कारण अब इन राज्यों में जनता के ऊपर नए नए दंड डाले जा रहे हैं, नए नए बोझ डाले जा रहे हैं और विकास के प्रोजेक्ट्स बंद करने की घोषणा की जा रही है, विधिवत रूप से घोषणा की जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये घमंडिया गठबंधन की जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीतियों का मैं परिणाम साफ देख रहा हूं और इसलिए मैं देशवासियों को चेतावनी, देशवासियों को सत्य समझाना चाहता हूं। ये लोग, ये घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है, भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। ये कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। उस दिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ,
यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि ये लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। और उन्होंने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास में सारे विषय पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के विश्वास को नई ताकत दें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें। ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। इसका ये परिणाम था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजना एक प्रयास था, लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है। इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के
इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहाँ फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है, सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिस वंदे मातरम गीत ने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी थी। हिंदुस्तान के हर कोने में वंदे मातरम चेतना का स्वर बन गया था। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मां भारती के ही टुकड़े किए, इतना नहीं, वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए इन लोगों ने। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि सिलीगुड़ी के पास जो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर है, उसको काट दें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। ये सपना देखने वालों का जो लोग समर्थन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जरा इनको, जहां भी हो, जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दें। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछें एक कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छ तीवू क्या है। और ये कच्छ तीवू कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए।
एक कच्छ तिबुक है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है? भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है? एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं जी, और राजनीति में कुछ नहीं था तब भी अपने पैर वहां घिसता था। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन से, और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं। देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966, 5 मार्च 1966। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है। कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी, और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे, मेरे ही देश में। और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में वहां के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की है। वो घाव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं, उन्हीं के कारनामे हैं। आदरणीय जी, मैं दूसरी घटना का वर्णन करना चाहता हूं, और वो घटना है 1962। 1962 का वो खौफनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चुभ रहा है। पंडित नेहरू ने
1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे। उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा। लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए, और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूपता रहता है। और किस प्रकार से उस समय नेहरू जी ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था। ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी यहां चले गए लोहियावादी, उनको मैं भी सुनाना चाहता था। जो लोग अपने आप को लोहिया जी का वारिस कहते हैं, और जो कल सदन में बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे, हाथ लंबे चौड़े करने की कोशिश कर रहे थे, लोहिया जी ने नेहरू जी पर गंभीर आरोप लगाया था। और लोहिया जी ने कहा था, और वो आरोप था कि जानबूझकर नेहरू जी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं कर रहे, जानबूझ करके नहीं कर रहे। और लोहिया जी के शब्द थे, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है। लोहिया जी के शब्द हैं, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है। 30,000 स्क्वायर मील से बड़े क्षेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से वंचित कर दिया गया है। ये लोहिया जी ने नेहरू पर आरोप लगाया था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तुम्हारा रवैया क्या है। ये कहा था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हृदय को, उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की है। मेरे मंत्रिपरिषद के 400 मंत्री रात्रि निवास करके, और अकेले स्टेट हेडक्वार्टर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, और मैं स्वयं 50 बार गया। ये आंकड़ा नहीं है सिर्फ, ये साधना है, ये नॉर्थ ईस्ट के प्रति समर्पण है। आदरणीय, और कांग्रेस का हर कामकाज राजनीति और चुनाव और सरकार के आसपास ही घूमता रहता है। जहां ज्यादा सीटें मिलती हो, राजनीति की अपनी खिचड़ी पकती है, तो वहां तो मजबूरन सही कुछ कर लेते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में देश सुन रहा है, नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर एक्का दुक्का सीटें होती थी, वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको देश के नागरिक के रीते उनकी कोई संवेदना नहीं थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए जहां इक्का दुक्का सीटें हुआ करती थी, उसके प्रति सौतेला व्यवहार ये कांग्रेस के डीएनए में रहा है,
पिछले कई वर्षों का इतिहास देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में उनका ये रवैया था, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत मणिपुर, भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज, अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे, ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर से न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। उनको सिर्फ
राजनीति के सिवा कुछ सूझता नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर में जो सरकार है और पिछले 6 साल से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए लगातार कोशिश, समर्पित भाव से कोशिश कर रही है। बंद और ब्लॉकेड का जमाना कोई भूल नहीं सकता है। मणिपुर में आए दिन बंद और ब्लॉकेड होता था, वो आज बीते दिन की बात हो चुकी है। शांति स्थापना के लिए हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वास जगाने का प्रयास निरंतर हो रहा है, आगे भी होगा। और जितना ज्यादा हम राजनीति को दूर रखेंगे उतनी शांति निकट आएगी, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट आज भले हमें दूर लगता हो, लेकिन जिस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से आसियान देशों में का महत्व बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा। हमारे ईस्ट की इस प्रगति के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वैश्विक दृष्टि से सेंटर पॉइंट बनने वाला है। और मैं ये देख रहा हूं, और इसलिए मैं पूरी ताकत से आज नॉर्थ ईस्ट की प्रगति के लिए कर रहा हूं, वोट के लिए नहीं कर रहा हूं जी। मुझे मालूम है कि करवट लेता हुआ विश्व की नई संरचना किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्री के अंदर प्रभाव पैदा करने वाली है, और तब नॉर्थ ईस्ट का क्या महत्व बढ़ने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट की जाहो जलाली गौरव गान फिर से कैसे शुरू होने वाला है, वो मैं देख सकता हूं, और इसलिए मैं लगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसीलिए हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को पहली प्राथमिकता दी है। पिछले 9 वर्षों में लाखों करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने लगाए हैं। आज आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक नए एयरपोर्ट, ये नॉर्थ ईस्ट की पहचान बन रहे हैं। आज पहली बार अगरतला रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा है। पहली बार मणिपुर में गुड्स ट्रेन पहुंची है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन चली है। पहली बार अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है। पहली बार अरुणाचल में सिक्किम जैसे राज्य एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है। पहली बार वाटरवेज के जरिए पूर्वोत्तर इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे बना है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एम्स जैसा मेडिकल संस्थान खुला है। पहली बार मणिपुर में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है। पहली बार मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे संस्था खुल रहे हैं। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट की इतनी भागीदारी बढ़ी है। पहली बार नागालैंड से एक महिला सांसद राज्यसभा में पहुंची है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार पूर्वोत्तर से लसित बरफुकन जैसे नायक की झांकी गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है। पहली बार मणिपुर में रानी गाइडिंलिउ के नाम पर पूर्वोत्तर का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जब सबका साथ सबका विकास कहते हैं, ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमारे लिए कमिटमेंट है, और हम देश के लिए निकले हुए लोग हैं। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन ये देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्ष के साथियों की एक बात के लिए आज तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो वो सदन के नेता को नेता मानने को तैयार नहीं है। मेरे किसी भाषण को उन्होंने होने नहीं दिया है, लेकिन मुझ में धैर्य भी है, सहन शक्ति भी है, और जेल भी लेता हूं, और वो थक भी जाते हैं।
लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले, थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है राष्ट्र। चलिए कोई बात नहीं, 2028 में हम फिर से मौका देंगे। लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए, कुछ मुद्दे ढूंढ करके आइए। ऐसे क्या घिसी पिटी बातें लेकर के घूमते रहते हो? और देश की जनता को थोड़ा विश्वास इतना मेरे से कि चलो भाई आप विपक्ष के भी योग्य हो, इतना तो करो। आपने वो योग्यता भी खो दी है। मैं आशा करता हूं कि थोड़ा होमवर्क करेंगे। तू मैं और चिल्लाना, चिखना, नारेबाजी करना, उसके लिए तो 10 लोग मिल जाएंगे उनको, लेकिन थोड़ा दिमाग वाला भी काम कीजिए ना। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजनीति अपनी जगह पे है। संसद ये दल के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। संसद ये देश के लिए सम्मानीय सर्वोच्च संस्थान है, और इसलिए सांसदों के लिए भी इसके प्रति गंभीरता होना बहुत जरूरी है। देश इतने संसाधन लगा रहा है, देश के गरीब के हक का यहां खर्च किया जाता है, यहां का पल पल का उपयोग देश के लिए होना चाहिए, लेकिन ये गंभीरता विपक्ष के पास नजर नहीं आ रही है। इसलिए अध्यक्ष जी, ये राजनीति ऐसी तो नहीं हो सकती, चलो खाली है जरा संसद घुमाते हैं, इसलिए संसद है क्या? ये तरीका होता है क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये चलो संसद घुमाते भावना से राजनीति तो चल सकती है, देश नहीं चल सकता है। यहाँ देश चलाने के लिए हमें काम दिया है, और इसलिए उस जिम्मेवारी को अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम जनता जनार्दन का, अपने मतदाताओं का विश्वासघात करते हैं, और इन्होंने विश्वासघात किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा इस देश की जनता पर अटूट विश्वास है, अपार विश्वास। और मैं अध्यक्ष जी विश्वास से कहता हूं कि हमारे देश के लोग एक प्रकार से अखंड विश्वासी लोग हैं। 1000 साल की गुलामी के कालखंड में भी उनके भीतर के विश्वास को कभी उन्होंने हिलने नहीं दिया था। यह अखंड विश्वासी समाज है, अखंड चैतन्य से भरा हुआ समाज है। ये संकल्प के लिए समर्पण करने की परंपरा को लेकर चलने वाला समाज है। वयम राष्ट्रांग भूतः कह करके देश के लिए उसी संवेदना के साथ काम करने वाला ये समाज है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक है कि गुलामी के कालखंड में हम पर बहुत हमले हुए, बहुत कुछ झेलना पड़ा हमें, लेकिन हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के चिंतकों ने, हमारे देश के सामान्य नागरिक ने विश्वास की उस लौ को कभी बूझने नहीं दिया था जी। कभी भी वो लौ कभी बूझी नहीं जी। और जब लौ बूझी नहीं तो उस प्रकाश पुंज की साए में आज लोग हम उस आनंद को ले रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते 9 वर्षों में देश के सामान्य का, मानवीय का विश्वास
नई बुलंदियों को छू रहा है, नए अरमानों से को छू रहा है। मेरे देश के नौजवान विश्व की बराबरी करने के सपने देखने लगे और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हर भारतीय विश्वास से भरा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत न दबाव में आता है न दबाव को मानता है। आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है। उस समृद्ध विरासत विश्वास लेकर के, संकल्प लेकर के चली है। और यही कारण है जब देश का सामान्य मानवीय देश पर विश्वास करने लगता है तो दुनिया को भी हिंदुस्तान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आज जो भी दुनिया का विश्वास भारत के प्रति बना है उसका एक कारण भारत के लोगों का खुद पर विश्वास बढ़ा है। यह सामर्थ्य है। कृपा करके इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मौका आया है देश को आगे ले जाने का। समझ नहीं सकते तो चुप रहो, इंतजार करो, लेकिन देश के विश्वास को विश्वासघात कर करके तोड़ने की कोशिश मत करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में विकसित भारत के एक मजबूत नींव रखने में हम सफल हुए हैं और सपना लिया है 2047 जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होते पर ही अमृतकाल शुरू हुआ है और अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में है। तब इस विश्वास के साथ मैं कहता हूं जो नींव आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है उस नींव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा, भारत विकसित भारत होगा साथियों। और ये देशवासियों के परिश्रम से होगा, देशवासियों के विश्वास से होगा, देशवासियों के संकल्प से होगा, देशवासियों की सामूहिक शक्ति से होगा, देशवासियों की अखंड एक नाच के पुरुषार्थ से होने वाला है। ये मेरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हो सकता है यहां जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड के लिए तो शब्द चले जाएंगे, लेकिन इतिहास हमारे कर्मों को देखने वाला है। जिन कर्मों से एक समृद्ध भारत का सपना साकार करने के लिए मजबूत नींव का कालखंड रहा है उस रूप में देखा जाएगा। इस विश्वास के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सदन के सामने मैं कुछ बातें स्पष्टतापूर्वक करने के लिए आया था और मैंने बहुत मन पर संयम रख करके उनकी हर अपशब्दों को हंसते हुए, अपने मन को खराब न करते हुए 140 करोड़ देशवासियों को, उनके सपनों और संकल्पों को अपनी नज़र के सामने रख करते मैं चल रहा हूँ। मेरे मन में यही है और मैं सदन के साथियों से आग्रह करूंगा, आप समय को पहचानिए, साथ मिलकर के चलें। इस देश में मणिपुर से भी गंभीर समस्याएं पहले भी आई है, लेकिन हमने मिलकर के रास्ते निकाले हैं। आओ मिलकर के चलें, मणिपुर के लोगों को विश्वास देकर के चलें। राजनीति के खेल करने के लिए मणिपुर की भूमि का कम से कम दुरुपयोग न करें। वहाँ जो हुआ है वो दुखपूर्ण है, लेकिन उस दर्द को समझ करके दर्द की दवाई बन करके काम करें, यही हमारा रास्ता होना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस चर्चा में बहुत समृद्ध चर्चा इस तरफ तो हुई है। एक डेढ़ घंटा विस्तार से सरकार के काम का हिसाब देने का हमें अवसर मिला है और मैं अगर ये प्रस्ताव न आया होता तो शायद हमें भी इतना कुछ कहने का मौका न मिलता। तो फिर एक बार प्रस्ताव लाने वालों का तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन ये प्रस्ताव देश के विश्वासघात का प्रस्ताव है। ये देश को की जनता अस्वीकार करे ऐसा प्रस्ताव है और इसके साथ मैं फिर एक बार आदरणीय अध्यक्ष जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री गौरव गोगोई जी, श्री गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई जी। अब मैं श्री गोगोई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये है कि सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है। जो सदस्य इसके पक्ष में वहाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या रिपोर्ट है? आज की चर्चा के अंदर माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी और वीरेंद्र मस्ती जी का व्यवहार सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं रहा। मैं वीरेंद्र मस्ती जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं कभी भी सदन के सम्मान को ध्यान रखता हूं, आपके अध्यक्ष पीठ का भी ध्यान रखता हूं। जो भी और जिस भी व्यवहार से सदन का कार्रवाई से वो हमने इतना ही हुआ है कि मैं उसके लिए आपसे, आपके अध्यक्ष पीठ से क्षमा चाहता हूं। हम अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ? सर, मैंने उसी टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी उठाया था, लेकिन अफसोस की बात यह है, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज सर, the leader of the Congress party, sir, every time, whenever the Honorable Prime Minister speaks, whenever other minister speaks, whenever they reply, whenever there is a debate, every time deliberately he tries to disturb, sir. Brought to you by When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. 23 years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that.
the Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, Building a Blueprint for Climate Action. The climate clock is ticking, but we're just in time. We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai? Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की जरूरत नहीं है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द पेन, ग्रीफ ऑफ समवन एल्स, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. Years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. और अध्यक्ष जी देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे
नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है। आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग में सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। Hello and welcome. This was by far the longest speech by anyone while presenting or while speaking in a motion of no confidence. Only yesterday, there was a record set by Home Minister Amit Shah. The speech was 2 hours and 5 minutes long, and the Prime Minister surpassed that as well in a matter of a day. While records have been set, the original idea behind bringing a motion of no confidence by the opposition was to make the Prime Minister speak on the floor of the House on the issue of Manipur. And by the way, today is the 100th day of when the violence began in Manipur, on the 3rd of May. There is relative peace and calm on the streets, but very many security personnel as well. 100 days later, this matter reached Parliament. So in other words, what happened was that the opposition set a field, a cricket field. They had their players in place. A few weeks ago, we did a program right here where we said that is this a Bazigar moment for the opposition? That the opposition knows that it will lose in the numbers game, but it will win because it will get the Prime Minister to speak on Manipur on the floor of the House. The attempt was to put the Prime Minister in the dock. But has the BJP in this Shatranj ka game, or on this cricket field where the fielding was set, has done a nehle pe dehla? Obviously, because of their increased numbers, they got more time. And using that opportunity, has the BJP launched its 2024 political campaign, while the opposition wanted the focus to be only and only on Manipur. Let's quickly, because the Prime Minister himself used the cricket analogy that you set the fielding, we were hitting the sixes. We are furthering that cricket analogy with the help of this graphic presentation right here on screen. So, Modi's hits versus the opposition's fielding. You see, the field has been set by the opposition, and Narendra Modi and his men and women decided to do the hitting. So how was the fielding set? Let's start one by one. So this is Rahul Gandhi. In the fielding, Rahul Gandhi said that the BJP divided Manipur into two. The Prime Minister has not visited Manipur. It doesn't consider Manipur as a part of India. Can send the army to end violence, but won't. From Haryana to Manipur, the government is sprinkling kerosene across India. Now, this was a very targeted and sharp attack by Rahul Gandhi
on the issue of Manipur. He also spoke on the Bharat Jodo Yatra, saying that the Bharat Jodo Yatra is not over. I walked to understand India. I understood what I loved, what I am willing to die for, and India is a voice which cannot be silenced. So this was the opposition's fielding, and the biggest showcase for the opposition, Rahul Gandhi, spoke, and this was the fielding which was set. But the first person who came out to bat, and of course very many people did, but the first person yesterday who came out to bat from the Treasury benches was Home Minister Amit Shah. He wanted to speak on the issue of Manipur, but the opposition insisted that there should be a no trust motion where the Prime Minister should speak. So Amit Shah went first in this Sansad showdown, and he said the no trust motion was brought to create confusion. Trust motions reveal the true face of coalitions. So as you can see, that while he did speak on Manipur, and we will get to that in just a short moment, Amit Shah opened this up because in a no trust vote, you can talk about anything. So he utilized his time to talk about other things as well, i.e. converting it into an election forum, raising the pitch. Next point, verdicts before 2014 on corruption as well as divisive politics. Prime Minister Modi, he says, pioneered the politics of performance. New era of development after 2014. India is the bright spot in the world economy. UPA protects those in power, but NDA fights to protect principles. Now this is the point that he made about his own government. What did the opposition want to do? The fielding was set on the issue of Manipur. And using the no confidence motion, because it was not specifically on Manipur, Home Minister Amit Shah spoke about other things as well. And this was number one on his government's performance. Number two, he spoke about what the government did for Kalavati. If you recall, Kalavati is a lady who Rahul Gandhi mentioned in his speech way back in 2008. So that was brought again in public discourse by the Home Minister. He says all facilities to Kalavati were given by the Modi government. Now this is a point which the opposition or the Congress party has challenged as well. On the cricket field, with the fielding of Manipur, came another batting by Amit Shah. He says people have full trust in Prime Minister Modi. Rahul has been launched 13 times and he has failed. So as you can see, the pitch has been raised beyond Manipur. He then says the Prime Minister, and takes this beyond Manipur to Kashmir. The Prime Minister began a new era in Kashmir. No talks with the Hurriyat, Jamaat, nor Pakistan. Talks only with the youth of the valley. And then he comes to Manipur after this little prelude. He says, it is shameful to play politics on Manipur. We are ready for discussion, but the opposition wouldn't let me speak. Now, of course, he's referring to the original proposal of the government that you get the Home Minister to comment on the situation in Manipur, an appeal which the opposition rejected because they wanted the Prime Minister to speak. Home Minister Amit Shah says there's a long history of violence in Manipur. The Prime Minister woke me up at 6 a.m. over the Manipur clash. We're holding talks for the peace in Manipur. So that was the batting which was done on the opposition's fielding by Home Minister Amit Shah. Just a short moment ago, on this very same fielding which was set by the opposition on the issue of Manipur, but, and I'm repeating this again, but in a no trust vote, the government and the Prime Minister no less tried to create this as an Apada Mein Afsar, broadened the scope of the discussion, and in a fairly long speech, he started off by saying that this is not our floor test, this is their floor test. There is no trust motion because these people are lucky for us. You know, the sort of the commentary of the Prime Minister was very clearly addressed to a constituency ahead of the elections. And you can also call it a pre-election speech. And why do I say this? You will soon know. He then said NDA and BJP will break all poll records. The more opposition attacks me, the more I succeed. The Prime Minister predicted another opposition-led trust vote in 2028. He then says that the India alliance is new paint on an old failed machine.
And that's a very significant point, that he says that this name, INDIA, is actually NDA with two I's. I means I, me. So that was the correlation that he drew. He says Congress has a history of tearing apart India, and the same they've done in the abbreviation called I.N.D.I.A. So as you can see again, the fielding was set on Manipur, and the hits were way beyond Manipur, because in a no trust vote, you can actually talk about anything. And in a no trust vote, where the government has a majority, an overarching majority of 336 MPs, you see what happens is that the time to speak is allotted proportionate to the number of MPs that you have. With more MPs, the BJP got more time. They spoke more, and they spoke about very many things. The Prime Minister then says the opposition set the fielding, and that's where he used the cricket analogy, which we are extending right here on this show. The opposition set the fielding, the government hit the sixes. Opposition kept saying no ball, we hit the century. He then says party over nation for the opposition. For them, it is party over the nation. Opposition is power hungry, have given a scam-free government. Now, this is something which has repeatedly been challenged by the opposition. He says the Congress declared banks of this country dead. We cleared the non-performing assets, or the NPAs. The Congress believed in Pakistan, not Kashmiris. Earlier, terrorists used to kill. They did not act. All these points that were made. While up to this moment, for about, his speech was about 2 hours and 15 minutes, till that point, he had not spoken on Manipur. And the moment the opposition walked out is when the Prime Minister started speaking about Manipur. So there was a mention in the Prime Minister's speech on Manipur, but by then the opposition had walked out. And this too was used by the government as an opportunity to say that they do not want to discuss Manipur, and they want to run away from the Manipur debate, that they did not have the patience to listen to the discourse on Manipur. So in this game of cricket, because the Prime Minister used a cricket analogy, so have we, with an opposition's fielding in a no trust vote on the issue of Manipur, with the intention that they will corner the government on Manipur, and with the government and their batting, what is your assessment on who has scored better? I think the jury is still out on this. Let's quickly go across to our reporters. In just a short moment, we'll have them on screen, Megha Prasad as well as Sunil Prabhu. Megha, if you can hear me? Can Megha hear me? Okay, we're going to go back to Megha in just a short moment, but Sanjay Singh is a senior journalist as well as Aarti Jera. Thank you very much to the two of you. Mr. Sanjay Singh, to you first. Do you feel that the idea behind this, and we've done this discussion right here on the channel, that the idea of the opposition coming up with a no trust vote was to corner the Prime Minister and the government on the issue of Manipur, to get him inside Parliament, because the allegation was that he's shying away. And because this was not a specific discussion on Manipur, the government used its extended strength and thus more allotted time to talk about many issues and not just Manipur. Yet we have discussed this issue before. I think the opposition strategy, it was a flawed strategy. And I have said this before, I say it again, that by moving no confidence motion, they had given a huge advantage to Prime Minister Modi. In fact, this was a boon for the BJP and Prime Minister Modi to come out with what you can say that sounding the bugle for 2024 election, because nation was going to be glued to no confidence motion. Also, Prime Minister's response, which was to come, incidentally, this was 3 day long no confidence motion debate. Now, what I say so, I said this was a self goal for the Congress and their alliance. This was what you call in Hindi ki kulhari pe pav marna. This was something like that, because no confidence motion, you don't mention a particular subject. You talk of anything and everything. Barring Gaurav Gogoi, nobody actually touched Manipur issue in detail. It was just in passing from leaders in opposition benches.
And therefore, when you move that, and Amit Shah yesterday clarified, you don't understand meaning of no confidence motion. When you move this motion, you should be ready to discuss everything. And Prime Minister today said you lost your chance because when Manipur was to be discussed, it was to be focused on Manipur, but you did not allow so. And so today, when you move no confidence motion, and he said कि ये भगवान का वरदान है, भगवान बहुत दयालु है. He went on to say the God was magnanimous. He made you move no confidence motion and therefore give us an opportunity to talk about a whole lot of things, an opportunity which otherwise we did not have, we could not have got. And he was so forthright about that. And on Manipur, both Prime Minister and Home Minister explained things. I slightly differ with this thing, Apada mein awsar, because this awsar was given, there was no Apada as such for the government. Manipur, of course, is a very, very serious situation out there. And if you refer to Manipur about that, then perhaps it's okay. But okay, Mr. Singh, I'm going to come back to you. Let's get in a view from Ms. Aarti Jairath also. Ms. Jairath, do you feel that this was a case where the opposition set the field? In a way, they staged an event which, this was a stage which was set up for the government to appear and give a photo finish. I mean, I understand. Remember, you and I were part of a debate where we were saying that whether this is a Bazigar moment, they will know they will lose and yet they will win because they will get the Prime Minister to speak. But when the Prime Minister started speaking on Manipur, which was a very delayed intervention, about 1 hour 40 minutes later, the opposition, particularly the Congress, walked out. So what message does this send? Well, Sanket, there are several things here. I think the opposition should have realized that the BJP, particularly Prime Minister Modi, would use this to kick off his election campaign. He did this in 2018. He was bound to do it again now. And he's very good at it. Also, there's no limit to the amount of time the Prime Minister gets. So he can speak on and on and on and on, which is something that the opposition does not have. So to have expected to corner the government on Manipur was, I think, a pipe dream. What the opposition did say was that this was going to be a battle of perception. It was not a battle of numbers, it's a battle of perception. In which case, they should have also come prepared with the narrative for the forthcoming elections. But I did not see that narrative or hear that narrative in anybody's speeches. They were just attacking the government, from all sides on all kinds of issues. But what was the narrative that they were making or crafting, which would form the basis for their platform, which would be the platform on which they would go to people next year? That did not come out at all. And so actually, I think the opposition, I don't know what field they set, whatever field they set, it was clearly all wrong because the BJP used that field very, very cleverly to launch its election campaign, while the opposition failed to launch its election campaign. Do you feel that as the first big attempt to prove their might as INDIA alliance, this was a bit of a weak start for the opposition? A very weak start. I mean, they had the opportunity, to actually kick off an election campaign, which they failed to do. And they had no narrative except for attacking the government on Manipur, price rise, this, that, the other, all hackneyed topics, we know about it. Also, the only thing I will say is that the fact that Manipur has got so much attention, because of that video, because of Parliament, two things have happened. One is that I think there is a national consciousness now about Manipur, and Manipur is no longer seen as something very distant, far away in the northeast. It has become part of the national discourse, which I think is a huge, it's a huge thing that has happened because, mainstream India tends to ignore, the edges of India. Yeah. The second thing is that because Manipur has been so much in focus, I think the government has now got active.
and they are actually now moving to try that you would say in terms of nationalizing the discourse around Manipur, which the government would rather have people forgotten. That's right. So at least now there's some action happening in Manipur. The fact that the Home Minister met the Kuki groups, appealed for peace, discussed mass burials, and you feel that that could largely be because of the sustained pressure built by the opposition. That's right. That's right. So on the issue of Manipur outside Parliament, they were actually able to exert the kind of pressure Mr. Sanjay that was Singh, needed. my final question to you, don't you think it is extremely unfortunate that political point scoring, both from the government side as well as the opposition, on what did you do, what did you, what is happening in your state, what you did in Manipur many years ago, and all of this on the floor of the House is extremely unfortunate. It's political point scoring on a very disturbing, terrifying situation. People have died in Manipur. Sanket, I think no solution can be found if you are not aware, or at least you don't want to recognize historicity and root of the problem. If you simply go by the current situation and do something and say something and not talking about and not understanding the situation which existed in the past, and because of which certain situation have emerged, if you say you don't talk about why the High Court gave No, one moment, Mr. Sanjay Singh, when Corona happened, the point that was being made by the government is that this is not the time. You can blame us later, let us do the firefighting. I am extending the same argument here. Why should this be the time for politics, either from the treasury or the opposition benches? Sanket, you douse that firefight. Can I say something? And political point scoring on both sides. The need of the hour, I'm sorry, Sanket, the if you give something on platter to the government, to restore So one by one, please. So you agree that the government too made this political, just like the opposition. It became, Manipur became about political point scoring. What happened here was political. So therefore it had to be political. Okay. What happened here was political. What was happening was political. The incident, the situation happening, there was a security situation out there. Okay. The security situation was being dealt, but when the situation, the speakers here are political, obviously a political response was to be given. Okay. I think based on the assessment by the experts over here, Ms. Jairat, my apologies because we've run out of time, but I'm sure we'll get an opportunity to talk about this in the future also. Based on the assessment of the experts here, it clearly appears that the purpose behind bringing a no confidence motion did not really go in favor of the INDIA alliance. In fact, it ended up helping the government even more as they got disproportionate amount of time to say much more than Manipur and perhaps even launching their 2024 election campaign. Good night and goodbye. Co-powered by It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change, and it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on
is yours. Menace has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की जरूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that. God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. 23 years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change, and it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates probably. Hello,
and welcome. You're watching the news. I'm Gargi Rawat. The no confidence motion was defeated in Parliament today as the Prime Minister replied on the third day today. But another horrific gang rape case has emerged in Manipur. All that and more coming up ahead. Let's take a look at the headlines. The no confidence motion defeated in Lok Sabha after the Prime Minister's reply. He said the opposition had been decimated in the debate. He hit out at the Congress with a jhoot ka dukaan taunt. And with no mention of Manipur for over 1 hour, the opposition staged a walkout. Later, the Prime Minister listed the Congress's failures in the Northeast. Meanwhile, another horrific gang rape has emerged in Manipur. A woman living in a relief camp has claimed that she was gang raped on the 3rd of May, which is the day the violence broke out in the state. She says she was fleeing her burning home with her children when she fell and was caught by a mob. The centre has moved a bill in the Rajya Sabha that seeks to exclude the Chief Justice of India from the panel to appoint the Chief Election Commissioner and the election commissioners. Instead, a cabinet minister will be included. The opposition hits out. Over 1,200 buildings have been destroyed in Nuh, Haryana by the administration after the communal violence there. But NDTV now finds that several houses that were brought down by the bulldozers were actually built under government schemes. Meanwhile, after pressure, panchayats in Haryana have retracted their diktat to boycott Muslims. The police in Mangaluru have seized over 100 kilos of chocolates laced with marijuana from 2 shops. These were being sold to school children, and the case emerged after parents realized their children were addicted. And Rajnikant Mania as his new film Jailer has hit theatres. Offices give holidays as fans celebrate the release. This film may have the biggest opening for a Tamil film this year. Our top story now, and earlier this evening, the opposition's no confidence motion was defeated in Lok Sabha by a voice vote. Ahead of that, Prime Minister Narendra Modi had replied to the no confidence motion, and he began by predicting that the opposition would try and bring a no confidence vote again in 5 years in 2028. And he stressed that by that time, India would be among the world's top 3 economies. He claimed the opposition had been decimated in the debate that had gone on for over 3 days and that they set the fielding, but the government hit 6s. But after an hour with no mention of Manipur by the Prime Minister, the opposition then staged a walkout, after which the Prime Minister hit out at the Congress for its failures in the Northeast. He said the Home Minister had outlined the situation in Manipur and it was a priority for the government. The opposition had been demanding the Prime Minister speak in Parliament over the situation in Manipur, but when the BJP didn't concede, the no confidence motion was moved to force the Prime Minister to address the Lok Sabha. और अध्यक्ष जी देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है।
आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग में सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। Now, on the issue of Manipur violence, another horrific case of sexual assault during the ethnic clashes in Manipur in early May has come to light. This after the survivor, who's been living in a relief camp, filed a police case. More and more women in Manipur are now coming to the police to narrate the shocking ordeals that they underwent, as the authorities have encouraged them to speak up. Now, in this latest case, a 37-year-old married woman from Manipur's Churachandpur district has alleged that she was caught by a group of men while she was fleeing from her burning house with her 2 sons, niece and sister-in-law, and gang raped on the 3rd of May. That's the day the violence broke out in the state. NDTV has seen copies of the Zero FIR as well as the complaint letter from the victim. Police sources have added that this was perhaps the first case of sexual assault on women, as it happened within the first hour of violence. The woman said she was fleeing her home with her sons when she fell. Her sons ran on, but she was caught by a mob and allegedly gang raped. NDTV's editor-in-chief Sanjay Pugalia spoke to Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, who said that there had been exceptional changes in Assam since 2014. He also said on Manipur that no one in the state is blaming the Prime Minister for the violence. इस सरकार में खास बात ये हुई है कि पॉलिटिक्स हो या गवर्नेंस या जिसको कहें डेवलपमेंट, उसके नाते जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक बड़े बड़े लैंडमार्क हैं ये। तो नॉर्थ ईस्ट में पिछले बरसों में चेंज क्या हुआ है, जैसे आपने ये पीपल इंटरेक्शन इंटरफेस का एक चेंज बताया, पॉलिटिक्स कितनी बदली है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी तो अभी भी है। एक नॉर्थ ईस्ट में एक परसेप्शनल चेंज हुआ फ्रॉम 2014। Development was at very slow pace. From 2014, suddenly एक कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एकदम साइना बॉर्डर तक रोड बनना शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक शुरू हुआ। Suddenly all meter gauge had converted to broad gauge. एक गुवाहाटी एयरपोर्ट अभी मेरा लगता है कि अगर नया हवाई जहाज़ इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारा लैंडिंग का जगह भी नहीं है। सो इट बिकम सो मच बिजीएस्ट एयरपोर्ट, इंडियाज़ 5th बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर। सारे नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल फ्लाइट्स एयरपोर्ट पूरा शुरू हो गया। उड़ान स्कीम आया, वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हुआ, हाईवेज काफ़ी बने, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पैमाने में सुधर गया। सो एक 2014 से एक ह्यूज परसेप्शनल चेंजेस हैपन इन नॉर्थ ईस्ट, दैट somebody is caring for the region, somebody is working for the region, and you don't have to go and camp Delhi to getting your legitimate dues done, because broad gauge was a legitimate expectation. हर स्टेट कैपिटल राजधानी एक्सप्रेस से जोड़े, दैट वाज आवर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, बट वो काम नहीं होता था। मैं नहीं बोला कि बिट बाय बिट काम नहीं बना, अगर कोई मेरा एक्सेलरेशन नहीं था, कोई एक फोकस प्रोजेक्ट नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट को करना है। कोई बड़ा एक व्यक्ति एमपी बने, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 साल रूल हुआ, लेकिन नाउ इट इज़ बियॉन्ड दैट, इट इज़ द रीजन हैज़ बिकम फोकस। उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप भी बोलते हैं अभी डिस्टर्बेंस है। आप देखिए मणिपुर में अभी भी डिस्टर्बेंस है, बट नोबडी इज क्रिटिसाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, कोई गृह मंत्री जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। नोबडी इज सेइंग दैट दिस इज हैपनिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले कुछ भी हो जाता था, द ब्लेम वुड हैव कम टू दिल्ली। नाउ people know that this is our conflict, nothing to do with Delhi. So आप आज मई से ये conflict situation है नॉर्थ ईस्ट में, and you will see the politician from mainland is criticizing Narendra Modi,
But nobody from Manipur is blaming Narendra Modi. And you can watch that entire interview on NDTV on Friday at 8 p.m. The government today introduced a bill for establishing a committee of the Prime Minister, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, and a cabinet minister nominated by the Prime Minister to select members of the Election Commission of India. The panel will now exclude the Chief Justice of India as a part of the selection process. Amid the din in the Rajya Sabha today, the Union Law Minister Arjun Ram Meghwal introduced the bill, which could lead to another tussle between the government and judiciary. The opposition has hit out over this move. Now, a special report from New in Haryana. The bulldozer action following communal violence there was stopped by the Punjab and Haryana High Court. But by then, the administration had already demolished over 1,200 buildings in the district. NDTV found that several of those homes that were demolished were actually built under state and centre housing schemes. Saurabh Shukla reports. These people are showing government certificates that prove they are BPL or below poverty line families. Yet the houses of about a dozen such families were demolished on Sunday after the violence in Nagina, in Haryana's New. Among the houses demolished were two houses built in 2012-13 under the Indira Awas Yojana and the Priyadarshini Awas Yojana for families living below the poverty line. Now, the children of these families are living without a roof. मेरा मकान सरपंच ने बनवाया था, किसान सरपंच ने पंचायत के थ्रू, और अब सरकार की तरफ से टूट गए भाई। अब गरीब आदमी है हम, अब कहाँ जाए जब हम पे जगह ही ना है। These houses clearly show they were built under the Haryana government's Priyadarshi scheme. Yet the administration says they were demolished because they were illegal. मेरा परिवार में जी 5-6 मकान तोड़े गए हैं, मेरा और मेरा भाई का मिलके, मेरे बच्चों का। मैं मौत में था उस टाइम, मेरे को सूचना नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी मेरे को। जो मेरा जब जिस टाइम मैं घर पे आया उस टाइम मेरे को जो बुलडोजर चलता मिला थी। The administration says they have only demolished those houses that were built on government land. But the big question is, how can houses allotted by the government be illegal? Meanwhile, panchayats of Haryana has started taking a U-turn on their diktat, asking villagers to boycott Muslim traders. This U-turn happened after the government said the decree would disturb social harmony. Panchayats of Kablana and Mundakhera villages of Jhajjar district have now released a video saying that the decree is withdrawn. ग्राम पंचायत कबलाना सर्व धर्म व सर्व समाज का सम्मान करती है। वह ग्राम के सभी धर्मों व जातियों के आने जाने वालों का स्वागत करती है। पिछले लेटर में जो चोरी की घटनाओं को देखते हुए फेरी वालों की वेरिफिकेशन व गांव में रह रहे किराएदारों की वेरिफिकेशन संबंध में था, जिसका किसी धर्म विशेष व क्षेत्र से कोई संबंध न समझा जाए। और फिलहाल चल रही घटनाओं से गांव कबलाना और छत्तीस बिरादरी का कोई लेना देना नहीं है। Taking cognizance of the boycott orders, the Haryana government had yesterday called for strict action against such notices. On the pressure of government, more than 40 panchayats have taken U-turn against their own diktat of boycotting Muslim traders from their villages. But the big question is, to show the proactiveness, why Haryana government has demolished its own allotted houses of poor in Nu, which have nothing to do with riots. In Mewat with Qasim and Sachin, Saurabh Shukla for NDTV. Now, a disturbing case from Mangaluru where the police have seized over 100 kilos of chocolate because they're laced with marijuana. Now, this entire case emerged after parents realized that their children were addicted to the chocolates. They look like delicious chocolates, but in Karnataka's Mangaluru, they were laced with marijuana. This shocking crime was unearthed when some parents grew suspicious after their children demanded the same chocolate costing Rs 15 to Rs 20. The police then raided two shops and seized 125 kilograms of chocolates allegedly packed full of drugs.
And based on the FSL report what we have received yesterday, it is being confirmed that North India, specifically from Uttar Pradesh, they were procuring it and they were selling it here over the shop. Other than that, their involvement is still being further investigated. While the two shop owners arrested in this case have been sent to judicial custody, parents are left worried to entertain their children with sweet treats. Because once they get addicted, it becomes extremely difficult for us to de-addict them, because children's tastes are governed by their taste buds, right? They love what tastes good for them. So as parents, it's our responsibility to watch what they're eating and give them in moderation. A similar incident took place in Raichur recently, where two shopkeepers were arrested for selling drug-laced chocolates. The police are trying to unravel the network as well as identify the mastermind who's trying to target children in particular. Is it just Mangaluru, or are these chocolates being supplied to other parts of Karnataka? Until we have these answers, think twice before you pick up that same piece of chocolate. With camera person Govind, Pratibha Raman in Bengaluru for NDTV. Now a shocker from Madhya Pradesh's health sector, where the Comptroller and Auditor General's report has flagged lapses in the health scheme in the state and claimed that 1.1 crore has been paid to 403 beneficiaries who are dead. This is the Jawaharlal Nehru Cancer Hospital in Bhopal. Thousands of cancer patients from across Madhya Pradesh state come here daily. Many of them beneficiaries of the government's Ayushman Bharat scheme that provides free access to health insurance coverage to the poor. A report by the CAG has flagged major lapses in the scheme. At this hospital, for instance, papers say that on just one day, March 20, 2021, 233 people were admitted and treated here via Ayushman cards. The problem is the hospital had just 100 beds as on March 20, 2023. The hospital claims the CAG report interpreted hospital admissions incorrectly. हम लोग कीमो लगाते हैं जो डे केयर वार्ड में कीमो लगाई जाती है. डे केयर वार्ड में जब कीमो लगाई जाती है तो हम उसको किसी भी पेशेंट को 24 घंटे के लिए भर्ती नहीं करते. उसका कीमो लगने का जो साइकिल है, जो भी उसका टेन्योर होता है, 2 घंटे 3 घंटे, उतनी देर के लिए वो पेशेंट हमारे पास आता है, कीमो लगवाता है और चला जाता है अपने अगली कीमो के लिए, और उसके बाद हम दूसरे पेशेंट को लगाने लग जाते हैं. तो इसमें आप ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं लगता मुझे कि उसको हमने भर्ती किया था, क्योंकि 2 घंटे का वो एडमिनिस्ट्रेशन है केवल, वो भर्ती नहीं है. तो 203 मतलब भी आंकड़ा कैसा है मैं नहीं इस पे कोई भी विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा, पर जो वस्तुस्थिति है वही है. The CAG report found more discrepancies across MP hospitals. More than 1 crore was paid to about 403 patients who had been declared dead in the database. 8,000 patients were shown to be hospitalized at multiple hospitals across the state during the same period. The audit names 24 state hospitals, including a government hospital, which showed much higher occupancy than the actual bed strength. 25 hospitals submitted claims for 81 patients, twice for various surgical treatments, the audit said. The flagship scheme implemented by the National Health Authority provides a health cover of Rs 5 lakh per family per year to the beneficiaries. Till date, more than 23 crore beneficiaries have been verified and Ayushman cards were issued to them for availing free treatment. But in Madhya Pradesh, even ghosts were treated under the scheme. In Bhopal, with camera person Rizwan Khan and Zafar Multani and Anurag Dwari for NDTV. Now, a special report from Jammu and Kashmir, and the shadow of the gun is fading as tourism grows in the Keran sector near the line of control, as the government has opened up one of the most militarized border areas to tourists, and there are jobs for locals. I'm on the banks of Kishanganga River, which divides Kashmir with the Pakistani occupied Kashmir, and this area is now being opened for the tourists, which indicates changing time situation in Kashmir, not only in the valley, but also along the line of control. Peace dividends for people living near the line of control. The shadow of the gun is fading as tourism grows in the Keran sector. This as the government opens one of the most militarized border areas to tourists. There are now jobs for locals, signaling a major change in the situation. This group of youngsters had no hope of jobs here until a few months ago.
Now they have become the first beneficiaries of the government move. They have set up tented accommodation for tourists who want to stay right on the LOC. यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं जहाँ पे मतलब जो ये है कि मतलब जो 3 साल से यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बना है सर, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड जो भी है J&K का, यहाँ से हमें टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। सरकार ने अब इसको फॉर्मली टूरिज्म के लिए खोला है, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे जॉब्स मिल जाएंगे लोगों को? जी सर बिल्कुल, यहाँ पे जो है कि जॉब्स मिल जाएंगे यहाँ पे। The peace dividends after the ceasefire understanding are on the other side of the LOC too. Hotels and tourist infrastructure has come up right on the LOC. Kiran locals are now hoping to build similar facilities on this side of the LOC too. Not long ago, they were sheltering in underground bunkers during cross-border shelling here. ऐसे मतलब और आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह हम भी ऐसे ही मतलब बनाएंगे, हमें भी होटलें बनानी है, तो ऐसे से हमारा काम भी आगे चलेगा तो इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे. This used to be the most volatile border areas along the line of control, and people were living in underground bunkers. Today, underground bunkers have been replaced by tented accommodations for the tourists, as this area line of control has been opened for tourism by the government, which is indicating change, and this change is both exciting as well as challenging. Since last 3-4 years we are having peaceful borders. Since the ceasefire of 221 we don't have any major escalation on the borders, so there is always a curiosity to know about our borders. Prime Minister of India and Honorable Prime Minister has recently launched a Vibrant Village program in which not only we are developing the border infrastructure, but we are also promoting tourism at a big scale. Jammu and Kashmir has witnessed a boom in tourism over the last few years. Last year, 1.88 crore people visited the former state. While most were Vaishno Devi pilgrims, tourist arrivals in the valley has also broken all previous records. Opening the LOC to tourism is not just taking the tourism sector to the next level in Kashmir, it also shows how things have remarkably changed in places that were literally no-go areas for common people. With Nazir Masoodi, Bureau Report, NDTV. And with that, it's a wrap from me. Coming up ahead, breaking views. Independent Election Commission. Does the centre's new bill dilute the Supreme Court verdict? That's coming up ahead. Stay with us. Co-powered by NDTV News Network that informs, inspires and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की जरूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that. God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world.
23 years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं. The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt, and that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. Good evening and welcome to NDTV. This is Breaking Views. I am Ankit Tyagi.
Ladies and gentlemen, the central government has introduced a bill in the Rajya Sabha on appointment of future chief election commissioners and election commissioners of India. Remember, they are part of the Election Commission of India, which is responsible for conducting the elections all across the country. Now, the said bill, viewers, proposes a 3-member committee for the purpose, led by the Prime Minister, which will also have the leader of opposition and a cabinet minister nominated by the Prime Minister. Now, this diverges from a Supreme Court ruling of March this year, which stated categorically that the committee should consist of the Prime Minister, the leader of opposition, and the Chief Justice of India. So the bill essentially drops the CJI to include a cabinet minister, virtually giving the ruling government a majority in the 3-member committee. Now, if you remember earlier, the process was that the government will send the name to the president, the recommendations, and the president then used to approve the election commission. There were a lot of questions raised. The opposition said that it has to be free from any interference as far as the government is concerned, and that is possibly the reason why this petition was put in. But as soon as this bill, in fact, was introduced, opposition leaders have alleged that the government is undermining the directive from the Constitution Bench of the Supreme Court and are also questioning, that's what the opposition is saying, the government's intent behind this change in the bill that has been brought in the Parliament for the appointment of the Chief Election Commissioners and the Election Commissioners. आज जो बिल लाया गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और विपक्ष का नेता और एक कोई सरकार का मंत्री 3 लोगों की कमेटी होगी, तो मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग को सक्षम बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, सही ढंग से, प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ये जो बिल जो लाया गया है बहुत ही सही है। ये गैर लोकतांत्रिक बिल है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की इस देश के ऊपर कब्जा करने की साजिश है। 2 बीजेपी के आदमी मिलकर बीजेपी के आदमी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे और वो बीजेपी के लोगों को जिताएगा, तो देश में लोकतंत्र कहाँ रह गया। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने राज्यसभा के अंदर ये बिल पेश किया, क्यों नहीं विपक्ष की सुनी गई? So is the government, by excluding the Chief Justice of India from the appointment of Election Commissioners Bill, Selection Committee, are they doing anything contrary to the law or in contempt of the Supreme Court? Well, legally, absolutely not. As the Supreme Court judgment clearly states that the judgment appointing the CJI to a selection committee will continue to hold good till a law is made by the Parliament. So now the government has exercised that option, and technically the government has moved to make a new law through the Parliament, and hence they are not in contravention or in contempt as far as the Supreme Court is concerned. But viewers, now remember that the Supreme Court directive had come after questions were raised on the appointment process of election commissioners, and with an intent to ensure the independence of the Election Commission of India. So I just want to very quickly at this moment bring you up to speed with what was the spirit as far as the Supreme Court order was concerned, which came on March 2nd, 2023. In its verdict, the Supreme Court had said the elections should undoubtedly be fair, and the buck stops with the Election Commission. In fact, the Election Commission is duty-bound to act in a fair and free manner. The Election Commission cannot claim to be independent, then act in an unfair manner. These were, in fact, the wordings of the Supreme Court judgment. The power of the ballot is supreme, capable of unseating most powerful parties. A party in power will have a near insatiable quest to continue in the saddle. Huge surge in role of money, power, and criminalization in politics. The Supreme Court also said a pliable election commission offers the surest gateway to acquisition and retention of power. Democracy
can succeed only if all stakeholders work to maintain the purity of the polls. And the Supreme Court in the end said if purity of elections is not maintained, it would lead to disastrous consequences. Election Commission must remain aloof from all forms of interference from the executive. That, ladies and gentlemen, was the very spirit of the judgment that was passed by the Supreme Court. So, but the government now exercising their right to make a law on this, is it going against that spirit? That is one question that we'll try and discuss. This development, ladies and gentlemen, is also significant because there is a vacancy which is set to occur in the Election Commission, as the Election Commissioner, Mr. Anup Chandra Pandey, is due to retire in February 2024, which will be closer to the announcement of the 2024 Lok Sabha election schedule. The question that we are raising at this moment, Independent Election Commission, does centre bill dilute the Supreme Court verdict? Let me very quickly open this up to my esteemed guest this evening. S.Y. Qureshi, former Chief Election Commissioner of India, is with us. We also have Ashwini Dubey, Advocate Supreme Court, and Sanjay Hegde, Senior Advocate Supreme Court, also joining us. Mr. Qureshi, I would like to start with you first, sir. I remember speaking to you when the judgment had come and you had termed this judgment historic. Now you've also seen that the government is coming up with a bill. The change that the government has made is excluding the Chief Justice of India from the selection committee and including a minister nominated by the Prime Minister. How do you see this development, sir? It is a mixed bag. First of all, it is a compliance of the Supreme Court that a collegium system is being introduced. And a bill has been passed, and Supreme Court had said that till such time that the bill comes, some arrangement was suggested, a collegium consisting of the Chief Justice. Now, collegium is being constituted. The only difference is that CJI has been excluded, and a cabinet minister appointed by the Prime Minister will be the second person. So now, if the decision making is by majority, obviously the 2-1, the leader of opposition will become totally useless and meaningless. Now, there are 2-3 good and interesting new things which have happened. Now, one, that a search committee has been proposed, led by the Cabinet Secretary and with 2 senior most secretaries of Government of India, and who will select 5 names. Second important thing is that earlier there was no qualification prescribed. Anybody from the road could have been picked up and made a CEC. Thank God it hasn't happened in the last 10 years and it hasn't happened in the last 70 years. Now, qualification prescribed is as a secretary level officer with experience and integrity. Right. That's a very good thing. So, therefore, now whether the Chief Justice's exclusion is a good thing or a bad thing, both opinions can be expressed. Their Chief Justice is present in various collegiums, and what has been the performance of those collegiums? Director CBI, CJI is a party, and we have seen a director of CBI about whom IB reported that a criminal went to his house 183 times in 1 year. Okay. And but that was the quality of the selection by that collegium. And then even when this was brought out very openly, Supreme Court did not act, Chief Justice did not act, the guy completed his tenure until today, the inquiry has not been completed. So therefore, that raises another thing. Mr. Hegde perhaps will bear me out. Now, if suppose the appointment of a commissioner is questioned in the Supreme Court. Now, if Chief Justice has been a party to the selection, and he sits in judgment on that selection there, or his subordinate judges sit in judgment, it will be very awkward for a junior judge to overrule what Chief Justice has decided. It will be basically a conflict of interest there. There is a conflict of interest. Therefore, keeping him out and having a collegium is fine. But provided it becomes essential that the decision will be unanimous. Which means the leader of opposition will not be marginalized. And it is very easy. And secondly, now
whether this will amount to leader of opposition having a veto power. Okay. Not at all. Not at all. Because he will be selecting from a panel of 5 selected by the cabinet secretary, and cabinet secretary is a government man. 4 extension given. Obviously, he will not spring a surprise on the prime minister by bringing in any undesirable name. So, this selection committee is a good idea, but it has to be unanimous decision. It has to be unanimous. If it is majority, then of course it is the will of the government that will prevail. But Mr. Qureshi, so overall, in perspective, the whole idea and the spirit of the judgment of the Supreme Court was to ensure that the Chief Election Commission and the election commissioners are above question. There are not doubts which are raised against them as far as the process is concerned. Do you feel that this bill upholds that spirit? Yes, it can be provided, the condition which I have mentioned to you is implemented. There is another great thing which has happened through the bill, which nobody seems to have noticed it. For the last 20 years, we have been demanding that the CEC is protected from removal. He can be removed only through impeachment. The other 2 can be removed very easily. So they used to feel they are on probation. And if some commissioner feels he's on probation, on the government's instruction, he can overrule the chief CEC 10 times a day. Now that protection has been given to all 3. That's a great thing and which needs to be appreciated. And with one more sentence, I'll finish my thing because I have to move on to somebody else. Sure. One negative thing which has happened, that they have downgraded the status of the CEC and the commission from Supreme Court judge to a cabinet secretary. Earlier, before Mr. Session, it used to be secretary, now cabinet secretary. Although salary of the cabinet secretary and Supreme Court judge is the same, but in warrant of precedence, in stature, that has been downgraded. I'm sure it is not intentional, and government would like to reconsider. Very quickly, sir, in the end, I just want to ask you one more question before I let you go. Also, no matter what the selection process is, once you are on that seat, doesn't it also depend on how the election commissioner decides to exercise the powers given to them? I mean, in the end, it's their propriety and responsibility, the chair that they are occupying, isn't it? Absolutely. I entirely agree with you because it's a matter of individual style and conscience. For 70 years, they've been appointed by the government of the day. Many of them have been absolutely non-controversial. It's a question of conscience. And even during this regime, Ashok Lavasa case, he stood up. O.P. Rawat of this regime was a great CEC. There used to be editorial about him. So it's a matter of individual conscience also, and his backbone and his style of functioning. Mr. Qureshi, always a pleasure. Thank you so much for joining us, sir. I know you have an engagement. I'll let you go there. But Sanjay Hegde, I want to start with you, sir. We were trying to understand the changes. Now, is this an attempt to dilute the Constitution bench judgment? Is that what your view is on this, sir? Of course, it's an attempt to dilute the Constitution bench judgment. The Constitution bench judgment was not exactly to the government's taste, but this is what we can expect from this government. If any judgment of a Constitution bench or of a court is not really acceptable, they can change the basis of the law. And that is within their powers. They have the power to do it, but whether it is in good taste, whether the country takes it well, that's a different thing altogether, because this has come very close on the heels of the Delhi ordinance. In Delhi also, there was a Constitution bench judgment which said that personnel should be under the elected government. And they changed the basis of the law there. They've done the same thing here. So sometimes it does seem to me that this government looks at court judgments like many of Delhi drivers look at red lights. It is optional. But if we don't Mr. like it, you we were can jump hearing it anyway. just one intervention, sir. You were hearing what Mr. Qureshi was saying. He said that there are things that can be appreciated in that as well. He pointed out a very pertinent point that if the CJI is also part of that collegium, then if there are questions raised on the election commission, then it will be conflict of interest. It's better that the CJI is out of it. I entirely disagree there for one very simple reason. Obviously, the CJI would not be then hearing the case. Number two,
the judges of the Supreme Court are not subordinate to the CJI. The CJI is primus inter partes, that is the first among equals. And there have been cases and cases where courts have on the administrative side decided something, like firing a district judge, for instance. But on the judicial side, when they've found something wrong, they've set aside those judgments or those orders, notwithstanding the fact that the CJ of the court was part of it. Okay. So I don't see a conflict of interest. Ashwini Dubey, there are those, Mr. Hegde also articulated this, that this seems to be an attempt to undermine the whole spirit and dilute the Supreme Court order. There are lawyers, those who have gone to the extent of saying that this will be struck down. This is against the Constitution. Legally speaking, at this moment, the government might not be in contempt because the judgment said that the government has to, in fact, pass a bill, and the government has done so. But do you feel that this will stand the legal, constitutional scrutiny if it is challenged in the Supreme Court? Yeah, Ankit, first, it is a Supreme Court only which has been pushing for the reforms. Reforms, Ankit, vis-a-vis the institutional reform to have a selection process for the appointment of the Chief Election Commissioners and Election Commission. That's a Vineet Narayan case in 1966 onwards. Now, the Constitution bench judgments refers specifically, Ankit, Article 324, subclause 2, which refers to the appointment of Chief Election Commissioner and other election commissioners, which shall subject to the provisions of any law made in that behalf by the Parliament. So the President has been given powers to make a law. Now the Supreme Court itself in its judgment have categorically said that till the time the Parliament makes a law. So whether the law which has been made by the Parliament, which the Supreme Court has been pushing for last many decades, and the law which has been passed by a legislative body which is having competence to pass a law, will be amenable to the Supreme Court. Of course, the Supreme Court can review when its judicial powers can review any law which is arbitrary to the Constitution. But Ankit, there is a difference. Little difference is that when the election commissioner or chief election commissioner are appointed, there are safeguards vis-a-vis that he shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a judge of the Supreme Court. Right. The conditions of the service of the chief election commissioner shall not be varied to his disadvantage. Now, Ankit, how do you see the CVC's appointment? CVC's appointments actually also on the same parameters. Okay. So even otherwise, its government's process is only till the appointments. Rest of the functionings has to be regulated by the CEC and EC itself. Okay, but Mr. Hegde, you know, like you mentioned the Delhi Services Bill as well, will this create another friction point between the government and the judiciary? Do you see this as a collision point? I mean, it's the second judgment of the Constitution bench after the Delhi Services judgment that has been, the legislative route has been used to overturn that in a way. And we have already seen the differences as far as the appointment of judges is concerned. Do you see that escalation between the judiciary and the government on this? I don't think that there will be an escalation because the judiciary is mature enough. The judiciary's job is to interpret the law as enacted. Thereafter, if the basis of the law is changed, then it examines the new law for constitutionality. What the judiciary has so far said about this kind of process is that you may change the basis of the law, but you cannot directly overrule a judgment. If a judgment is on facts, if a judgment is on the basis of the Constitution itself, then without changing the Constitution, if you only pass an act of Parliament. So you have not changed the basis of the judgment. The old judgment will then have to prevail. Okay. So this kind of examination, re-examination of the new law will certainly happen. But I think both institutions are mature enough to say, to not see it as some kind of battle of wills, but that which is a necessary process of political life. Very quickly, Mr. Hegde, do you then see, one step forward, two steps back as far as the
whole idea that was enshrined in that judgment about the independence of the judiciary, of the Election Commission with this bill coming in? Yes, of course. See, it is like saying that we are going to have the World Cup shortly. So if India's captain, vice captain, and Australia's captain were to decide who the umpires were, to the exclusion of everybody else, how fair would that process be? Mr. Dubey, just picking up from what, in fact, Mr. Hegre is saying, you said that the court had, in fact, mandated that this should be brought in. There are no two ways about that. But in terms of perception and also the whole idea of keeping the Election Commission free of any interference, does this, I mean, don't you think that this is now all set for another legal battle? This will, at least perception-wise, not look good on the government. No, of course, anyone is aggrieved by this bill may challenge it to the Supreme Court. It's a fundamental right. But the question, Ankit, herein is, when the office of the Election Commission is an independent constitutional body and which has been vested with the powers of superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls and also conduct of all parliamentary state legislatures elections, and that too when there are various safeguards, not in one judgment, but number of judgments, the safeguards have been given to the Election Commission. Where is the question of arbitrariness? But of course, the Supreme Court, within its judicial review, has ample powers. It finds that the powers are arbitrarily being exercised or have been exercised by Parliament by making this law in order to gain the political benefit. Then of course it can be challenged. But so far as the legislative competence of making a law is concerned, Ankit, how will we deal with that? Okay. How can we take that power? That the Supreme Court judgment, 5 judges judgment led by the Honorable Justice K.M. Joseph. In his view, he has articulated this that till the time the Parliament makes the law. So let's see what will happen tomorrow. But as of now, how will you deal with Article 325 or Subclause 2? Because that's deal with the power to make the law. That's right. Over to you. That's right. There is no infringement as far as that power of the judiciary, of the executive is concerned to make the laws as they deem fit. Of course, it can be, it can go through the scrutiny of the Constitution in a constitutional court. But gentlemen, thank you so much for sharing your views on the broadcast. That's all the time that I have on this edition of Breaking News. Ladies and gentlemen, this debate has just started. This bill has been tabled in the Parliament. There is going to be debate, or hopefully a very sound debate. It's a very, very important bill that is going to decide a lot of things as far as the free and fair election process is concerned in the country through the Election Commission. So that's all the time that we have in this edition. Thank you so much. Good night. Co-presented by From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. 23 years of the big fight. This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. It's undeniable.
we're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening, not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV. because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की जरूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that. God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. In a world filled with noise, we bring you news that you can rely on, with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate.
It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. Good evening, you're with Left, Right and Centre. I'm Veera Raghav. The top political focus of the day. The Prime Minister struck hard at the opposition in a more than 2-hour-long reply to the no-confidence motion moved against the government. His charged political speech in Parliament could well set the tone for the 2024 election campaign for the Bharatiya Janata Party. As expected, given the lack of numbers with the opposition, the motion was defeated by a voice vote. The Prime Minister's speech, in which he declared confidently of a return to office for a third term, was punctuated with sharp attacks, taunts and political insinuations at the Congress over both historic issues, including decisions related to the Northeast, and the opposition party's present-day political situation. The opposition benches continuously chanted slogans demanding that the Prime Minister focus on speaking about the situation in Manipur and not about other political issues. They later walked out of the House in protest because the first and large portion of the Prime Minister's speech didn't address the issue of Manipur, which he came to later. These are the key highlights from the Prime Minister's speech. और देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहाँ भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है। आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। So what does this mean politically in New Delhi as well as for the situation in Manipur? But before we get into analysis with our guest, joining us this evening is Vasudha Venugopal from New Delhi, who tracks the BJP very closely, and also Ratnadeep Chaudhary from Guwahati, who's been tracking the situation in Manipur as well. But first to you, Vasudha, it seems to be that the Prime Minister has set the tone for the 2024 election campaign. What's the big takeaway for the BJP, and what's next as far as the party is concerned politically? Well, I think, Veera, the Prime Minister covered a lot of ground today in his speech in the Parliament. Basically, of course, when he started speaking on Manipur, the opposition did walk out. But in his speech before that, he covered a lot of points which I think would form the fulcrum of the BJP's campaign in the run-up to 2024. There are 5 or 6 points which I think I can talk to you about. And one is basically the way he talked about Darbarwad or dynasty-led politics. This is something that the BJP has often targeted the Gandhi family with, and that I think is also going to be an important point here, because today the PM talked about the way Jawaharlal Nehru or Indira Gandhi handled the crisis in Northeast, and
how Darbarwad or a feudal way of working, something that he alleged that the Gandhi family practices, has been responsible for the way many stalwarts in the country have actually not been able to find their place in history, and this includes people like B.R. Ambedkar or Sardar Patel and many people like that. He also talked about the fault lines within the opposition that a lot of us are also aware of, because 26 parties with very different characters have come together, and the PM said that 26 parties have come together, but they are trying to brand a damaged car as an electric vehicle. That doesn't mean that the nature of the vehicle is going to change. So this is something that he talked about, specifically saying that this in India front, the two I's stand for the arrogance of these parties. He called them Ghamandiya, which is a take on India, and he also India, the party that the parties are calling themselves by that name now. And he also talked especially on the arrogance of the Gandhi family. This is something that he has talked about in the past, but he put it all together today. And the third important point is, of course, the cultural oneness of the country, and this is where he attacked the DMK. And this is something that you would be interested in, because he spoke about E.V. Velu, the minister's comment on India being someplace in northern India, which of course raised a lot of criticism. The Prime Minister said that Tamil Nadu is a place that has given birth to a lot of Bhakti traditions and has actually given birth to a lot of leaders and icons like APJ Abdul Kalam or Rajaji or for that matter, even Kamaraj. And, ministers should be careful while talking about it. And so cultural oneness is something that the Prime Minister talked about today, the North-South divide. This is going to be important in the run-up to 2024. Of course, what I think is the most important thing is also the way he reprimanded the opposition for not coming up with a formidable narrative to counter his governance, or for that matter, even to give him some sort of constructive feedback. This probably was his attack also on Rahul Gandhi, which he made it very clear about, and he's talked about many of the statements that he made, including, Lanka that was not burnt by Hanuman. He said it was burnt by arrogance, and that is probably what led to the Congress party falling to 44 seats. So he basically talked about this incompetence of the opposition, and also the inability to understand social aspirations. Yeah. Right, Vasudha, what about the substantive takeaway as far as Manipur is concerned? I believe we've lost the line with Ratnadeep as well. Is there anything significantly substantial that one can take away as far as the Manipur situation is? I understand that the political impact that you're pointing out is very important. Perhaps the opposition gifted the Prime Minister this platform, as the Prime Minister mentioned in his own speech, saying that opposition is throwing no balls after no balls. But what about the fundamental political situation in Manipur? How do we construe what the Prime Minister has said as far as ground realities there and in terms of going forward there? See, I think the Prime Minister was very confident and optimistic and hopeful while talking about Manipur. At the same time, he was not aggressive. His speech on Manipur was towards the end, and he made it very clear that he was taking off from what Amit Shah spoke yesterday. The Home Minister actually gave a 2-hour long speech on Manipur yesterday. A large part of it was dedicated to Manipur, and he said that Manipur is a state that he has travelled extensively. Northeast is jigar ka tukda. That is what he said. It's very important for his government, and it is his personal commitment and also his government's commitment to ensure that peace and progress returns to Manipur. And he said that he was very optimistic of a solution coming to the fore very soon. And for this, he also talked about opposition parties also joining hands with the government and thinking about exploring possibilities of a solution. And here in this regard, he talked about the Congress's sort of like handling of unrest in the northeast region, and he in fact very openly blamed the Congress for the kind of unrest that has happened in this northeast region. And he said ever since he has sort of taken over as PM, he has actually given this region a lot of thought, and that is something that he said. And taking off from what Amit Shah said, he has already met the cookie groups yesterday. So both Prime Minister and Home Minister seemed quite hopeful of some sort of solution, of a settlement coming to the fore very soon. Right, that would be very important to look forward to in terms of what tangible steps are. Obviously,
politics and political divide is what dominated this entire conversation in Parliament in terms of national focus. So did the opposition actually hand the BJP a platform to launch an offensive? Remember, till now, the opposition seemed to have had some kind of an offensive going with the formation of an alliance. Joining us this evening, seasoned political commentators and senior journalists Neerja Chaudhary, Aditi Fadnis, Amitabh Tiwari, as well as my friend Manisha Priyam, all of them joining us this evening. But my first question to all the panelists, and let me start with you, Neerja. The objective of bringing this no confidence motion, given that the opposition didn't have the numbers, was to put the Prime Minister on a spot as far as Manipur is concerned in Parliament. Given that, would it be fair now to assess that the opposition strategy was flawed and it's backfired and it gave the Prime Minister and the government instead a platform to take the offensive? Look, the opposition had a very strong issue in its hands. And what had happened to the women of Manipur, we will take a long time to live down as a country. But today it became an unequal battle. I think the ruling side turned the tables on the opposition, both with Amit Shah yesterday going into the history of the area, Manipur, why the government had done or not done certain things. It took 2 hours to make that case. And today the Prime Minister, in a very rhetorical way, using the opportunity to showcase the achievements of his government, as also to mount a blistering attack on the opposition generally, and the lines of the BJP strategy vis-a-vis 2024 elections began to be clear, because the Prime Minister not only attacked India, but more particularly the Congress party, and within the Congress party, the Gandhi family, and of course Nehru, Indira Gandhi by name. And then within the Gandhi family, he referred to Rahul Gandhi. So the attempt is again to make it a Modi versus Rahul battle. But I think the opposition could have done better in, mobilizing examination and attack. I think there could have been greater coordination for all the handicaps they were working under. And Rahul Gandhi, I found, was not as effective as we had expected. Important point that you make there, Neerja Chaudhary. Let me go across now to Manisha Priyam. Manisha, was the strategy flawed to bring in the no confidence motion? Because so far, with the India alliance formation, there was a sense of the opposition gaining an offensive. Has that changed today? I do believe that the whole strategy of the no confidence motion has not been able to either focus the debate of both houses of parliament on the Manipur issue, which is very, very important. So I think calling attention motions, specific issue raising in both houses of parliament would have led to a greater focus on the discussion on Manipur. There have been general statements of solace coming from the Prime Minister himself, calling the Northeast his jigar ka tukda. I remember Mahamaya Prasad called the youth in Bihar his jigar ke tukde. It means a lot. But I think there was a certain verbosity in talking about the political history of this country, talking about Lohia's critique of the Congress's, ignoring the Northeast as if it were a piece of geography akin to a stepchild. So in a sense, driving a wedge between Lohia's known anti-Congressism and the current followers of Lohia having become one with the Congress party. So a stringent attack on all of those who, in the name of socialism or in the name of being Lohiites, today seek to align themselves with the Congress. And of course, a front and center attack on the Congress party, very personalized comments also. For example, the one that said, कि उनके दिमाग की हालत तो पता ही थी, अब उनके दिल की हालत भी पता चल गई. So, the jokes were almost at a slant, but the Prime Minister also using the occasion to talk about the kind of development initiatives his government has made. So front and center, it is the Prime Minister leading. And if the no confidence motion was to end on this note, where neither the Manipur issue has been discussed threadbare, nor has been the opposition able to pin the ruling party, I think not much gain. It's not lost also the fact
that just before the Prime Minister spoke, you had Jyotiraditya Scindia speaking from the other side. So a former congressman coming now to the benches of the BJP and leading a frontal attack on the Congress party itself, as if there were secrets he knew and he's lashing out against the Congress party with those secrets. Right. So as far as the optics of the last few hours of the Lok Sabha today is concerned, I don't think I heard enough on Manipur, and I did not see the government being pinned down as the opposition had told us, the citizens of India, that it would be able to do. Aditi Fadnis, Manisha Priya making the point that as far as the optics and the audio was concerned from Parliament, one didn't hear as much about Manipur. Was the intention of the opposition largely political, less about bringing Manipur into focus or finding a solution? Was the intention of the opposition to target the Prime Minister? And what's really happened now after today? How does this move forward? Well, I don't know how it moves forward, because I don't think the Prime Minister's speech about Manipur and supplying solace to the people there is frankly going to have too much traction in Manipur. The wounds are still fresh. Both sides expected that the Prime Minister would endorse their position, that the Prime Minister would label them as the victim. He has not done that at all. And the overall speech is bestowing equivalence between himself and Rahul Gandhi. So if the India alliance was expecting that their lack of leader would be an indication of their selflessness in coming together and not projecting a Prime Minister for the power, I think today's speech by the Prime Minister has more or less sort of settled the issue that his rival or his person on the other side is Rahul Gandhi. It was disappointing about Manipur because the Prime Minister left with the sentence that Manipur से और भी गंभीर समस्याएं भारत के सामने हैं. Frankly, I can't see any more gambhir samasya than what is happening in Manipur today. That's right. Manipur gets washed out in the political divide here. Amitabh Tiwari, your takeaway. See, if the intention of the opposition was to have a debate on Manipur, then of course it is clearly visible that the no confidence motion was not a correct strategy. So many opposition leaders themselves were not very well prepared on Manipur, except Gaurav Gogoi and one or two more, while Amit Shah gave a comprehensive reply on the Manipur issue. Now, what the opposition perhaps lacked was a good orator in chaste Hindi. That is clearly the opposition lacking in the Lok Sabha. Now see, when the numbers are significantly stacked against you, 2/3 votes in favor of NDA, if there were votes, the opposition is bound to get very less allocation to speak. Now, when the opposition leaders are speaking on a no confidence motion, strategically, they would attack the government. That's fair on them. But since the ruling party has a significantly higher allocation of the time, it is not only being able, or it is visible that they were able to douse the attacks, they were able to launch a counter attack on the opposition, highlighting their failures in the last 70 years. They were able to list their achievements. We have done this, we have we're going to make India the #3 economy in the third term, etc., and also launch a vision. So in terms of content, if you see, if anybody is watching the debate consistently for 3 days, he sees that the opposition is only perhaps attacking, whereas the ruling party has covered a wider array of issues, not only negated the criticism on Manipur, but also made brownie political points going into the Lok Sabha in 2024. And the star campaigner also for the Congress clearly seemed to be ill-prepared for the debate. Right. Let me take one more point to Neerja now. In terms of
whether the focus of this issue was Manipur or was it the Prime Minister from the start of this conversation in Parliament? Was there something that could have been decisively different that the opposition could have done in terms of strategy to keep the focus on Manipur, A? And B, is this also a lesson for the opposition that when you train and focus on Narendra Modi, you tend to miss out on the big issues and often lose the offensive as we've seen in the past? Nirja. Look, you know, the fact that the opposition went in for a no confidence motion against the government of Narendra Modi, against his governance and delivery, then you're opening the whole field to a whole lot of issues. It's no longer Manipur. But the reason why they went in for a no confidence motion was to compel the Prime Minister to speak in Parliament, and they had made this into an issue that the Prime Minister had not said a word nor gone to Manipur. So at one level, the idea was to force the Prime Minister on Manipur, and yet the issue was wide enough, and the Prime Minister used it to the hilt to turn the tables on the opposition by showcasing the achievements of his government, and as I said earlier, launching a vitriolic attack, very, very sharp. One hasn't seen in recent time this kind of a sharp attack in Parliament on the opposition as the Prime Minister did mount today, and I think it's a foretaste of things to come in the run-up to the 2024 battle. Right, you make an important point, the run-up to the 2024 battle, as has been pointed out by several observers. But in terms of the situation in Manipur itself, what is the one big takeaway that one can take from this? Aditi, would it be right to say that this categorically outlines that while, yes, the Prime Minister expressed concern, there is an offensive pitch in that, in the sense that there's not going to be any compromise on the situation or the party's position or the government's position in Manipur, and whatever solution that needs to be worked out there, or how we go forward, would be with the present status quo, with the Chief Minister at the center of it, and then build around that. Would that be the takeaway that one takes on this? I think that's very, very clear that we have done nothing wrong. We tried to solve the problem, that the Chief Minister is not responsible for what happened there. The people of Manipur are not responsible. Then who is actually responsible? Well, you are not getting any answers from the government on that. Which is very distressing, and it should, actually make us all feel very ashamed of what is happening in our country. Manisha Priyam, in terms of the larger political import, that's a strong statement from Ashwini. In terms of the larger political import, what do we see? Are we going to see a decisive shift in terms of how the government is going to now deal forward? Does this mean, would this mark as the decisive day when, because there are several organizational issues before the BJP as well, that there are going to be decisive decisions that are taken, and we start the run-up to 2024 from today? So, in a sense, two things are very, very significant politically. Whatever can happen in any state in India, the Parliament is not going to be able to discuss it fully. I mean, the people of this country wanted to understand why Manipur happened. Not all of us happen to be deeply rooted in Manipur, but at the same time are very disturbed by what has happened. We could belong to any political party. So there's been some emotional consolation given to us. But what happened? I mean, we vote a government to power for certain reasons. We believe that law and order will take care of our lives, irrespective of what ethnic origins we belong to, what caste origins we belong to, whether I am a Bihari living in Delhi, whether my gender is this or that. Now that sense of feeling of belonging has been, disturbed, it's been shattered. I didn't find the answers to that. So is there a way of interrogating a ruling party and finding answers to failures? I think now state arenas will remain siloed in their own sense. Whoever can understand which tribe fights which one, which caste is antagonistic to which one, they can understand why women should get killed. Now that's not a great answer. There are procedural lapses, the law and order machinery has failed. There are provisions of the constitution that have not been applied in Manipur, but the parliament has not been able to interrogate enough on these matters. Therefore, state level politics is not going to be of much significance to discussions in parliament. Second, as far as the next election is concerned, it is quite clear that although
the BJP and the Prime Minister has got an NDA around him. It is he who is going to soldier the elections forward. It's his leadership under which the BJP is going to take these elections. Now it's already election time. And the speech making, as you can see, is replete with facts of history of who gave a daga to whom, what happened to Lohiite socialism, etc. So all strands of history are being invoked. They are being invoked by a capacity of speech making that is extraordinary. The other side doesn't seem to have a Hindi speech maker of the same quality. And if the other side is strong with its state level issues and state level leaders, they will all come with their small issues, which will never be really understood nationally. So it remains a dilemma whether the Rajya Sabha, which is the House of States, the Rajya Sabha is supposed to discuss and deliberate the issue of states. That also should have been able to rise up to the occasion and discuss the tragedy that is Manipur today. One hasn't seen that. Let's see what happens. But certainly state level issues are not going to become political issues for the center. That's a very important, larger parliamentary democratic question itself that you're raising about how the focus of the parliament on state issues. Amitabh Tiwari, whose responsibility was it then to ensure that the debate focused on substantive issues as far as Manipur is concerned? As Aditi was also pointing out, it was a strong comment. So who do you think was responsible? And B, has politics overshadowed an enormous human tragedy that we are witnessing in this country? See, it is the responsibility of both the ruling party as well as the opposition to debate substantive issues in the parliament. In the last 9 years, what we have seen is that the political parties have taken a very hardened stance. And it has become sort of an ego issue also, or ego tussle. So the Prime Minister does not attend the parliament for the first 2 days of the no confidence motion. You have Rahul Gandhi skipping Modi's speech in between. So there is a lot of now acrimony or tension between the opposition and the ruling alliance, despite representing different ideologies, which was not perhaps visible in the past. And it might also be a result of the absolute power which the Modi government enjoys in terms of sheer numbers, because the opposition does not have a say on many issues in the parliament, even if it brings up certain issues. The numbers do not back it. So it's become very difficult for the parliament to discuss issues of public importance, and I think both the parties are now are responsible, and they need to lower the guard and some sort of compromise from the senior leadership of both the parties or both the groups now need to sit together and see that the parliament now functions in a better manner and substantive issues are discussed. Okay, that's an important question. 10 seconds each. We are in the last minute of this program. Key takeaways, A, for the opposition. One key takeaway for the opposition from today and one key takeaway for the government. Starting with you, Amitabh Tiwari. Just 10 seconds. Strategize better is the key takeaway for the opposition, and for the government is that they should not be overconfident, and because anything could happen. The key issue is what is the impact the speeches made by Rahul and Modi on the neutral voters or the swing voters, which represent a higher share of the population. Okay, Neerja. No, I didn't get your question, sorry. I didn't get, there was distortion. Can you repeat your question? Key takeaway, one key takeaway for the opposition, one key takeaway for the government after today. 10 seconds. Yeah, the key takeaway for the opposition is they need to do much more work, better strategy. They could have, put the government on the mat saying, should not an all-party delegation go to Manipur to open dialogue with both sides, and let the government say no. But they should have come out with better strategy. Okay. As for the government, they need to answer more specifically what they're going to do in Manipur to defuse the situation and to resolve this division that's come up there. Because it's too important a state. Northeast is very important for the rest of India. Right, we are completely out of time. Very quick last word from you, Manisha, Priyam and Aditi.
So as far as the the opposition is concerned, they certainly need a tall, seasoned, and above middle age political leader who can speak with a sense of history and also in Hindi, apart from other regional languages. That's extremely important. Bring in the sense of history and counter all the historical arguments that are being placed before the people. And for the ruling party, they need to win more state elections. They win the parliament, they win the debates in the parliament, but states is where they're Last weak. 5 seconds, Aditi. Last 5 seconds. Better speeches in the past. I've heard better speeches from the Prime Minister in the past. So maybe he was somewhat on the defensive today. And certainly the opposition needs to get its act together. Right. Thank you all so much for joining us this evening. We'll keep this conversation going. Also, our focus on Manipur continues. That's all we have time for on this bulletin. But when we come back, we'll get you the best of the Prime Minister's speech in Parliament today. We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं। The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो if you understand the pain, grief of someone else, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. "23 years of the big fight." This show is not just an ordinary debate show, but it is a responsibility in service of our viewers. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. In a world filled with noise,
We bring you news that you can rely on with accuracy and integrity, because at NDTV, trust is everything. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. It's undeniable. We're facing the crisis of the generation, climate change. And it's happening. Not in some far-off distant land or some millions of years away. It's happening now. And it affects everything we know and love. Information around climate change can often feel too distant, too jargony, too scary, too anxiety-filled, too technical, or too political. I'm here to change that. The Climate Explainers, part of NDTV's 6-month-long campaign, building a blueprint for climate action. The climate clock is ticking, but we're just in time. We have a surprise for you. We're going to ask a bunch of you some special questions, and every correct answer is going to reveal what our surprise is. I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos. Bill Gates, probably. Nehru Place. Saket. Saket. Mumbai. Technical Guruji. Tech Guruji. Technical Guruji. Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं. The NDTV News Network that informs, inspires, and illuminates. Watch every side of the story here on NDTV, because the only side we're on is yours. Vikas Manas has met over 500 families of soldiers who have died protecting the nation. मेरा ये मानना है, जब आप धरती पे आते हो, अगर आप दूसरों का दर्द समझो, उसके दर्द के साथ जूझो, उसका कष्ट लो, तो भगवान देखता है ये कष्ट ले ही तो रहा है, दर्द सह ही तो रहा है, इसको अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है. तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द पेन, ग्रीफ ऑफ समवन एल्स, go through that, live with that, God will not give you your own pain and grief. That was fast, right? But tech is evolving. 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे. उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है. मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है. ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही. जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे. और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया. और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली. यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव
हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का। और बहस होते हुए लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है? आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए?
और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा, ये देश का विश्वास है। भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, उन्हीं के लिए कहा गया है दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं।